हेलो 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 हेलो। बेहतरीन शॉट, कैच हो सकती थी लेकिन खिलाड़ी ने अपने आप को सही समय तक पोजीशन नहीं किया। काफी देर तक गेंद हवा में लहराती रही, लेकिन एक मिस जजमेंट हम कह सकते हैं मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। 4 और रन जुड़ जाएंगे रेसिंग बुल्स के खाते में। राइट आर्म अराउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए इसे गाइड कर दिया है। ऑफ साइड में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थर्ड मैन के। थोड़ी बेहतर फील्डिंग एफर्ट हो सकती थी। गेंद का इंतजार किया, हालांकि उन्हें गेंद पर जाना चाहिए था, झपटना चाहिए था। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। एक बहुत ही घातक साझेदारी पनपती हुई। संदेश और संकेत के बीच ये बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, कलाइयों के सहारे इसे खेल दिया है। ऑन साइड में 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। हल्की सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन अंत समय पर संभाला अपने आप को और मात्र 1 रन लेने का मौका, और इसी 1 रन के साथ 50 रन पूरे संदेश के। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी।
एक बार फिर मैं सुनील रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं मौका 365 टसल प्रीमियर लीग 2023 में। हम एनएल कॉम्प्लेक्स दहिसर इसके खूबसूरत से मैदान पे आज तीसरा दिन पांचवा मुकाबला इस भव्य टूर्नामेंट का खेला जा रहा है। दो बेहतरीन टीम के बीच मैवरिक्स और रेजिंग बुल्स के बीच, जहां रेजिंग बुल्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला, और क्या फैसला। पिच को बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड किया और निसंदेह टॉस जीतते ही बल्लेबाजी का फैसला। फ्लैट विकेट, जहां पर गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्ले पर आती है, लेकिन कुछ ऐसी गेंदें हैं जो ग्रिप होती हैं, हल्की सी रुक के आती हैं, थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी इस ट्रैक पे। तो अगर आपके पास वेरिएशंस हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं बतौर गेंदबाज, लेकिन फिलहाल कहानी कुछ और। सातवां ओवर, गतिमान स्कोर है 83 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यह बढ़िया ओवर घटा है अब तक मैवरिक्स के कप्तान सिद्धार्थ द्वारा। एक रनआउट का मौका हो सकता था। अंत समय पर दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित, लेकिन ओवरथ्रो के रूप में संदेश के और रेजिंग बुल्स के खाते में एक और रन जुड़ जाएंगे। राइट आर्म अराउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंदबाज है सिद्धार्थ बरोट। फुल टॉस की ये गेंद डीप होती हुई यहाँ पर बल्लेबाज के लिए काफी तेजी से बल्ला चलाया था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे उनके पैरों पे जाकर टकराई। एलबीडब्ल्यू का शॉट, लेकिन उस अपील में विश्वास बिल्कुल भी नहीं, मात्र उत्साह। अंपायर ने नकारा। डॉट गेंद के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद अब स्कोर है 84, 84 रन, एक विकेट के नुकसान पर। संकेत और संदेश अभी भी क्रीज पर मौजूद। व्यक्तिगत स्कोर की अगर हम बात करें तो संदेश बल्लेबाजी कर रहे हैं 22 गेंदों में 51 रन, और इस 51 रन की पारी में 7 बेहतरीन बाउंड्रीज और 3 गगनचुंबी मैक्सिमम शामिल। वहीं संकेत एक एंकर रोल की भूमिका अदा कर रहे हैं अब तक, हालांकि बहुत 140 की स्ट्राइक रेट से वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों में 24 रन, 4 बेहतरीन बाउंड्रीज के साथ। 8वां ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर गेंदबाज अथर्व, और पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, बैकफुट पे जाके इसे पुल कर दिया है। कोई भी खिलाड़ी वहां पर स्क्वायर लेग में नहीं। एक और बाउंड्री संदेश ने अपने नाम की। What a knock this has been from Sandesh. Right from the ball one. Putting the bowler under pressure. Once again is in the air, should be taken. And it has been taken at mid-wicket. It wasn't an easy catch, but the fielder in the deep, running to his right, keeping his eye on the ball till the very end, and making no mistake. So that's an end of a brilliant knock from a destructive batsman, Sandesh. He has to go back to the hut. A much needed breakthrough this for Mavericks. They were looking, they were finding this wicket since long, and finally Atharva have provided a breakthrough. The new batsman walking out in the middle is the left-hander Dharmendra. So two left-handers are out in the middle for Raging Bulls. Dharmendra alongside Sanket.
And straight away, getting some good purchase from the turf. Bowler Atharva, who uses his wrist to a great effect, takes the ball away for the left-hander. This is good cricket. They are appealing. They believe they have got their man. An umpire has confirmed he has his finger up. He has given him out. Brilliant bowling from Atharva. One brings two. Dharmendra, he will have to go back to the pavilion. And he is gone without scoring much. He's gone for a duck. So Mavericks, they are pulling the things back after a couple of quick wickets. What an over this has been from Atharva. Didn't start on a very good note. New batsman has made his way to the crease. Is the skipper from Raging Bulls, Rakesh Putran. An explosive right-hander batsman, a stylish batsman. A good delivery, but down the leg. And as the match progresses, as the sun is out here at NL Complex, wicket is getting harder. What a delivery that was. It hurried to the batsman, but the line wasn't a good one. Slanting down the leg. Batsman lets it go, misses the wicket keeper as well, and the ball races away to the fence. 5 bonus runs will be added to the tally. 94 on the board, and we are still into the 8th over. 7.4, 94 follows of 3 wicket. This is good delivery and equally well played by the batsman, coming forward and playing it back to the bowler for no run. Excellent, excellent delivery. No footwork at all from the batsman. Was looking to cut it away, but the ball came in sharply to him. And he was able to get some bat on the ball. Dot ball to finish off a brilliant over. Couple of good wickets. And after 8, it's 94 follows of 3 wicket. The off spinner, skipper from Mavericks, he will continue, and that's a sloppy from the fielder at long off. That's a schoolboy mistake. And this will not please the captain at all. Ball sneaks through his legs, and that's a boundary for Sanket. Good batting. The previous delivery, he came forward and played it down the ground. The very next delivery, reading the length and picking the length very early, goes deep in the crease using the crease and punches it on the back foot through cover for a single.
nudged it on the onside. Good use of wrist by the batsman Rakesh, and with the single, he is off the mark, and that's 100 run for Raging Bulls. 100 on the board, 8.3 overs. Flighted delivery, driven down the ground. Once again, long off is in the picture. Enough time for the batsman to take one. जी हाँ, क्या बेहतरीन शुरुआत हुई है ये रेजिंग बुल्स के लिए। हालांकि अथर्व के उस ओवर में जहां पर उन्होंने तो बेहतरीन विकेट झटके, लेकिन रन रेट की अगर हम बात करें तो अभी भी 11.65, जो कि बहुत ही बढ़िया रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी काफी बल्लेबाजी बाकी। रेजिंग बुल्स हम जानते हैं काफी गहराई है इनके बल्लेबाजी में, तो अभी भी मैवरिक्स के लिए काफी कुछ काम करना बाकी है इस इनिंग में। टॉस के दौरान मैवरिक्स के कप्तान सिद्धार्थ ने कहा था कि वो कहीं ना कहीं 150 160 के आंकड़े के अंदर रोकना चाहेंगे रेजिंग बुल्स को, लेकिन वो आंकड़ा यकीनन अगर इस प्रकार की अगर बल्लेबाजी जारी रही रेजिंग बुल्स की तरफ से, तो वो आंकड़ा जल्द ही पार कर लिया जाएगा। बढ़िया गेंद, बिल्कुल भी रूम नहीं देते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को। हालांकि हाफ वॉली की ये गेंद ऑन द पैड्स, और इसे एक बार फिर डाउन द ग्राउंड खेल दिया। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे राकेश। ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद अब स्कोर है 106 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अथर्व एक सफल गेंदबाज रहे हैं अब तक मैवरिक्स के तरफ से। अपनी पहली गेंद एक बार फिर इन्हें एक अतिरिक्त उछाल प्राप्त हो रही है। कहीं ना कहीं जो खलाई का प्रयोग करते हैं ये, और उनका रिलीजिंग पॉइंट जो है सर के ऊपर से, ये एक कारण हो सकता है। वो एक्स्ट्रा बाउंस से बल्लेबाज को बीट कराने में सक्षम। बढ़िया ऑफ स्पिनर अब तक 2.1 गेंद फेंक चुके हैं, 22 रन देकर 2 बेहतरीन विकेट झटके हुए। एक और विकेट का पतन। गति में परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन। बल्लेबाज बहुत पहले ही मन बना लिए थे कदमों का इस्तेमाल करके गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। विकेट कीपर ने किया बाकी, और स्टंप आउट होकर पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज संकेत। शानदार वापसी कराई है अपनी टीम को अथर्व ने।
क्या उलट फेर रहा है इस पारी में अब तक। देवाशीष चौहान नए बल्लेबाज। अगर याद होगा आप सभी को कि अपने पिछले मुकाबले में ये बतौर सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन इस मैच में एक्सपेरिमेंट करते हुए गेंद हवा में और सुरक्षित बल्लेबाज। तेजी से गेंद गई राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए, बल्ले का मुख पहले ही मोड़ दिया था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास, टॉपेज लगा था लेकिन गेंद गई नो मैंस लैंड में। बल्लेबाजों का इम्तिहान लिया जा रहा है यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, लेकिन ये खराब गेंद। और राकेश बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। आप इस प्रकार के बल्लेबाज के लिए इस प्रकार की गेंदबाज बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। बैकफुट पे जाकर इसे कट कर दिया। कवर के खिलाड़ी ने चेस किया गेंद को, लेकिन गेंद काफी तेज सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यह बढ़िया गेंद, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए भाग चुके हैं। बढ़िया क्रिकेट रेजिंग बुल्स द्वारा। और यहां पर अंपायर की पैनी नजर, 1 शॉट रन का निर्णय। तो दौड़े आपने, 2 रन मिलेंगे आपको मात्र एक। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रेजिंग बुल्स के स्कोर है 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Mauka 365 Tussle Premier League 2023 Edition 2 Day 3 Match number 5, Raging Bulls up against Mavericks. Raging Bulls have come up with a great confidence after their empathetic win in their last contest, which had gone down the wire till the very last ball. Still fresh in the minds of many, 12 required of 2, and the batsman walks in was Pratik, and hammering those 2 crucial deliveries out of the ground to clinch a victory for his team. While talking about the Mavericks, they didn't live up to the expectations of their spectators in the previous match, and they fell short of their target. But a handy knock, a brilliant knock by the captain in the previous game. So lots of homework needed from the Mavericks, and today they looking in a good. No chance for the fielders in the deep to cut it off. It doesn't matter or what number he comes to bat. His approach will be the same. He knows only one business. He will keep attacking right from the ball one. Devashish Chauhan. Not a good delivery to bowl the batsman likes of Devashish. This is better length to bowl. Shortens his length a bit, pulls on a good length. Batsman waits for it, opens the face of the bat, but finds the fielder at point for no run.
The length and the line was pretty much similar to the previous delivery, but this one was shipping away to the right hander, and he lets it go straight in the gloves of wicketkeeper for no run. Shuffles across, was looking to play it on the onside. This is good comeback by Kunal. After getting hammered in the initial two deliveries of this over, three crucial dot balls. A half tracker delivery. Batsman waits for it and guides it. And he bowls it at the Yorker length for no run. High full toss. We'll have to wait for the umpire's decision. I believe he has his arm stretched. Yes, it is. No ball is the signal. And he has smashed it into the fence for a couple of bounce. Boundary. And a free hit coming up. And sometimes it happens. We have often seen bowler being carried away after bowling a good delivery. The previous delivery was bang on and was looking to replicate the same. Bowls a high full toss of Beamer, and what a bowl to bowl. Free hit delivery for no run. Pitched on a good length, and it carried so good to wicketkeeper. Was looking to cut away. This is good bowling by Aniket. Looks in a good rhythm. Bowls with a decent pace. It's going to be an interesting contest between these two. Damn good delivery. Once again, a tall, lanky bowler hitting the deck hard and letting the batsman some experiment. Once again, batsman stays on the back foot. Plays the shot for no run. Catch it is the shout. Is in the air. Should be taken. Fielder at long off was underneath it, and he has taken an easy catch. Easy grab for him. And that's a wicket number 5 for Mavericks. Aniket finally got the wicket, got his man. And this has been great comeback by Mavericks in this inning. So this is good captaincy move from Mavericks captain Siddharth. They know like they have got 5 good batsmen of Raging Bulls out in the middle, and he has brought his wicket taking bowler Tushan Shetty into the attack. They know a couple of wickets from here on, and the moment Tushan Shetty was looking to bowl a slower delivery, but batsman, he read it quite early. A full toss delivery, and he has dispatched it into the mid-wicket region for boundary. Boundary to end of over 13. Score is 147 for loss of 5 wicket.
Sweet sound of the bat. Good cricket. Once again, length delivery, waits for it and steers it straight in the hand of field की 180 190 के अंदर ही रोका जाए रेजिंग बुल्स को। जानते हैं ये विकेट उतनी आसान नहीं है जिस प्रकार की बल्लेबाजी रेजिंग बुल्स ने किए हैं अब तक। जहां तक मुझे याद है 170 178 4 गेंदें फेंकी गई और 4 सिंगल्स मिले हैं। बड़े शॉट्स खेलने में अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है बल्लेबाजों को। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के कुछ ही दूर गेंद टप्पा गिरते हुए। हालांकि पहला ओवर बदल गया है मैवरिक्स का। पहली गेंद में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्लेबाज वैभव द्वारा बल्ला भाज दिया था, का पतन हो चुका है। रेजिंग बुल्स 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर। Clean bowled. So Vijay has gone back to pavilion after scoring 11 crucial runs for his team and of over 17, 179 for 7. So after a wicket of Vijay, walks out in the middle is the youngest player of Tussle Premier League 2023 is Shahid, the young lad who is at the non-striker alongside the key skipper of Raging Bulls, who is looking good at the moment, 43 of 27. Wrong length, wrong channel to bowl to the set batter on the legs, and he has helped it on its way on the onside. Two fielder behind the ball, stops the ball within the boundary, and the batsman has taken two. Have conceded 23 so far. Bowls with a short run up, but is bowling with a great control. Kunal Soni. And what a way to get off the mark. Watch out for this guy. Excellent way to get off the mark. Excellent way to announce his arrival at Tussle Premier League 2023. What an eye-pleasing shot this has been from Shahid. Full toss delivery, once again coming from the sweet spot of the bat. He's timing everything. Boy, what this guy was doing, so down the order. Looking like a batsman of top order. Beaten by the pace this time. Length delivery was looking to guide it to the third man. Opens the face of the bat, but no connection whatsoever.
Full toss delivery has to be a no ball. Yes, it is. Way above the waist height of the batsman, and he was looking to uppercut. Couldn't make any correction at all. Free hit coming up for the youngster. Will be interesting. How does he encounter this? He goes up and over. Long off in the business, but the ball wins the race. That's a boundary. The second one coming from the youngster Shahid is already on 8 after 5 with two beautiful strokes. 190 for 7. Beg your pardon, 191 for 7 after 18 overs. तो मौका 365 में एक युवा खिलाड़ी को मौका मिला, शाहिद शरीफ, और उस मौके को भुना रहे हैं। काफी लोगों की नजर इनकी बल्लेबाजी पर, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बल्लेबाज प्रतीत होते हैं। पहली गेंद को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा, और गेंद गई ऑन साइड में। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, और ये बहुत बढ़िया देखने में नजर आया। बल्ला चला राकेश का, लेकिन दूसरा रन बहुत पहले ही मन बना लिया था शाहिद ने। धीमी गति की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। भाग्यशाली रहे, गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन एक जीवन दान बल्लेबाज शाहिद को। बढ़िया गेंदबाजी तुषार शेट्टी द्वारा। एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। स्लॉग ओवर्स है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास एक बार फिर, लेकिन गेंद में वो उछाल नहीं जिस उछाल की अपेक्षा बल्लेबाज कर रहे थे। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, रन लेने का कोई मौका नहीं। गेंद हवा में, और ये स्काई सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में इसे फ्लिक कर दिया है काउ कॉर्नर के रीजन के क्षेत्र के ऊपर से 6 रन के लिए। और इसी 6 रन के साथ कप्तान ने अपने 50 रन पूरे किए। Now that's some way to bring up the 50 in style for the skipper of Raging Bulls. Next delivery goes on the back foot, cuts it on the offside. .200 up for Raging Bulls. Change in pace. He has connected well, but finds the fielder at cover. No run taken. End of over 19. 200 for loss of 7 wicket. Last over will be bowled by Kalpesh Patil. What a beautiful shot. One bounce over the fence. A leg delivery. Batsman stands tall and goes inside out. Save the leg, says the batsman.
Skipper Rakesh Putran from Raging Bulls. He's on a rampage here, playing on 58 of 34. This will be the last delivery Rakesh would be facing in this inning. After this delivery, he will have to go back to pavilion as a retired batsman. Shuffles across, full toss delivery, goes downtown. And we'll have to wait for the umpire's confirmation. Seems like a boundary. Yes, it is confirmed by the umpire. I think it's a 35 balls faced by Rakesh. Brilliant delivery into the block hole. But still the batsman was able to manage to send it straight in the hand of fielder at long off to get a single. Strike given back to the youngster. Shahid playing on 9 of 7. Can he continue to impress everyone out here? Oh yes, he does. Though it wasn't a big shot, but a great sense of mind is by the batsman Shahid, knowing the fact that his keeper is looking a great nick, giving strike back to him. Sensible, all I can say. 2-1-0 on the board. Slaps it through the cover. 1 taken, 2 taken. And they are happy with 2. A little bit of fumble by the fielder, by the skipper of Mavericks, and that allows the batsman to scamper for a couple of runs. Last ball of this inning coming up. 2-1-2 on the board. And he has gone over the long on fence for a mighty maximum. Six of the last ball of the inning takes Raging Bulls total to 218. Rakesh Putran, the skipper, he remains not out on 71 of 38 with the youngster Shahid doing his job. 10 of 8. So Mavericks, they have a mighty total to chase down. 219 for them to get a victory in this contest. We will be right back with the chase in shortly.
All right then. The chase begins. 219 to chase down by Mavericks. And we have two openers out in the middle, Chaitanya and Vijay. Vijay is off the mark. So is his team. And Pratik Mane, the hero of the match from the previous contest, has a ball in his hand. Fuller delivery. And batsman went hard at it. Straight back to the bowlers for no run. Good delivery. Hurried to the batsman. A bit of a seam moment on this delivery. Outside edge and stayed in the hand of the fielder at third man. So both the openers are off the mark with a single. Mighty total to chase down. So the owners on the opener straight away. No time to breathe in, no time to settle. Just go boom, boom, right from the ball one. He slashes it. Ball is in the air. And what a brilliant grab. Unbelievable stuff. A batsman, he cannot believe this. And nobody here at present at this ground. It was in the air. And it was tipping. He covered a great distance. And takes a tumbling catch, diving to his forward. Batsman Vijay, he departs for one. Pratik Mane strikes in his very first over. Tejas, he has probably taken one of the best in the tournament so far. So new batsman walks in for Mavericks is Kshitij. A good batsman is up against the bowler, who is on a high confidence. Play and a miss. Extra pace and extra bounce has beaten the batsman. Dot ball to finish off an excellent first over by Pratik Mane. 2 for 1. Second over, and the captain Rakesh has handed over the ball to the youngster Shahid, who is just 13. He had a great time when he had a bat in his hand, played some
eye-catching strokes, and all-rounder. We'll have to see how effective he could be with the ball in his hand. Talking about the field placement, no sleep. One fielder can be seen at short third man, rather he's at gully, backward point, cover, and it starts off conceding an extra. Way outside the tram line, and batsman, he doesn't reach out for those. Lets it go straight in the hands of wicketkeeper. So looks in a great rhythm, good run up, good action this by Shahid. Though it was a wide delivery, but the length was a decent one. Good delivery. Attacking the stump, but I believe he has overstepped. No ball is the signal from the umpire. Right arm quick. Shahid Sharif, yeah, remember the name? One of the youngest, I believe he's the youngest in the tournament, Tussle Premier League 2023. He has all the potential, all the ability to be an impact player in the times to come. And watch out for that delivery. Watch out for the confidence. It was a free hit delivery. Mid on and mid off inside the circle. Batsman was looking to clear them off, but he was able to contact only with the thin air. Dot ball. Excellent delivery and equally well played by the batsman Kshitij. Waits for it and cuts it. Finds the gap between third man and point. And it wasn't a bad delivery at all. The quality of shot and the quality of batsman. Much better length, much better line. This one came in quickly to the right-hander. It hurried to him with no footwork at all. He has punched it through the cover. And they cross over for one. Well, this is so good to see this youngster running hard, steaming in and bowling to the good batsmen likes of Kshitij and Chaitanya, not giving anything to them to take him on. He likes challenges. He's up for them. Shorter delivery. Stand and deliver stuff. This time to the left of the fielder at mid-off. And in no time, ball goes over the ropes for the second boundary in the over. 14 on the board. We are into the second over. Brilliant delivery. And the way it has carried to the wicket keeper will really make the bowler feel good about it. Man, this guy doesn't look like a 13.
Excellent cricketer, exceptional from him so far. Another play and miss, but this time outside the off. I'm talking about him. He has got everything to be a big player, a brilliant all-rounder. And the more the game he plays, shot of LBW, but probably going down the leg. Denies the umpire. Single taken off the leg by end of over 2. Score is 16 for 1. Well, I was just talking about Shahid Sharif. The kind of player that he is can be more than a handy as a batter. Bowls with a new ball, and it's not an easy task, but he is up for it. A confident lad, and the more matches he will play, he will only get better and better. And look where he's fielding. He is fielding at point. Let me tell you, this is the position where your best fielder fields. So kudos to Captain Rakesh as well, giving all the opportunity to youngsters to showcase his talent. And this is what Mauka 365 is all about. Giving the chances to the fielders, to the players to come up and show what you bring with you. And this guy is up for everything, grabbing his opportunities and impressing everyone. A good delivery. A bit of a movement once again for Pratik. Batsman was looking to nudge it on the onside. No fielder at fine leg was probably looking to get some bat on the ball, but failed to do so. Dot ball. Talking about the Mavericks, both the batsmen are taking their own time before they unleash. Full toss delivery. He has driven down the ground but finds the fielder at cover. Should have been dispatched by the batsman, but he will be gutted with himself. Couldn't find the gap at all. Dot balls and the pressure will be mounting up on the Mavericks for sure. They have a big total to chase down. Excellent delivery. This is exceptional bowling effort, especially from Pratik Mane. Bowling is second over and has conceded only 3. Is in the air. And it goes over the fielder at mid-on.
One bounce over the ropes. Much needed boundary for Kshitij and Mavericks. Though he wasn't in a complete control, but they will get anything that comes their way. Good looking shot and sloppy. Sloppy at long off. Two back-to-back boundaries. And a 4-3 and the tally goes up to 25. A casual approach to this by the fielder at long off. Not, not acceptable at all, especially from the teams like Raging Bulls. 3 overs gone, 25 for 1. Still 194 required of 17 overs. Some destructive batsmen yet to come for Mavericks. Not to forget the captain himself from Mavericks, Siddharth Barot. A lot would depend how well he plays in this inning. But at the moment, Chaitanya and Kshitij, they have a big job in their hand to do. Have to stitch a good partnership, and at the same time, they have to make sure that the required rate it is not climbing up, which is at 11.41 at the moment. Shahid will continue, and the batsman will continue to swing the bat hard. No good connection, but they will get a boundary. No fielder at deep square leg. Chaitanya joins the party. A leg delivery, and he swings it hard inside edge of the bat. So that's the third boundary. 3 boundaries in row for Mavericks. Slanting it down the leg, and they are looking to steal a run. Direct hit at the non-striker's end. Would have been a curtain for the batsman. Would have been a suicidal running. Fortunate was the batsman. So 2 runs will be added to the tally. White +1. Down the ground, and he has driven it along the ground. 1 run taken, and they will have to settle only for 1. Excellent fielding effort.
Excellent delivery. Well, they believe the batsman has nicked it. Appeal for a caught behind, says no the umpire. Excellent stuff this from the youngster. Brilliant, brilliant bowling effort. But he will have to work hard on the extras that he is conceding. This is the second no ball that he has bowled. Probably missed his mark by some inches. Free hit coming up for the batsman Chaitanya. Yes, no, yes, no. And eventually single will be taken courtesy a misfield at the square leg. Another free hit delivery where batsman couldn't capitalize at all. And that shows the quality this young lad possesses. Came dancing down the track, lofted it over. And once again, the fielder had extra cover. He is running everywhere, running to his right, running to his left, and saving some crucial runs for his team. Applauded by his teammates, and why not? End of an over number 4. Score is 35 for 1. Mauka 365 Tussle Premier League 2023 Edition 2. Match number 5, Day 3. Raging Bulls up against the Mavericks, where Raging Bulls have won the toss. They had decided to bat first, and they put up on a big total of 218 with a contribution of Sandesh, who scored 55 of 24, Sanket 30 of 21, and the skipper Rakesh leading from the front, 71 or not out of just 38 deliveries. In reply, Mavericks, after 4 overs, 35 for 1. And they are going on a decent pace at the moment. Pratik will continue, and he continues to look for his second wicket. So this is good batsman, good batting by Mavericks. Chaitanya and Shitej after losing an early wicket of Vijay. Was looking to play
A cheeky shot. The kind of shot sometimes you get rewarded in form of four, but it's a risky shot. A nick through the keeper and you're gone. But at the moment, both the batsmen are safe. Kshitij is ready to face Pratik again. Goes in the air and finds the fielder at short mid wicket. With the required run rate climbing up, the pressure was mounting up on the batsmen, and they had to find a way to score some big runs. Chaitanya was looking to clip it over the mid wicket, but couldn't time it well at all. Toe end the ball, toe end of the ball bat, and it lobs up in the air, straight in the hands of the Dharmendra. His stay at the crease has come to an end. "36 for 2. तो एक साझेदारी पनप रही थी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, चैतन्य और क्षितिज के बीच, लेकिन जरूरत हो गया था, एक बड़ा शॉट खेलने की जरूरत बन चुकी थी और चैतन्य ने उस जिम्मेदारी को उठाया था। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन संपर्क ठीक और नहीं गेंद और बल्ले का। विकेट गंवाया और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद प्रथम शेट्टी और नॉन स्ट्राइकर पर क्षितिज अभी भी मौजूद। और पहली गेंद लो फुल टॉस की, ये गेंद हाफ वॉली की गेंद थी। इसे ऑफ साइड में खेलने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेकिन ठीक मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में रन लेने का कोई मौका नहीं। एक बेहतरीन स्पेल जारी है प्रतीक माने द्वारा। तीसरा ओवर अपना फेंक रहे हैं और महज 12 रन खर्च करके दोनों ही सलामी बल्लेबाज का विकेट प्राप्त किया है। बढ़िया गेंदबाजी, रक्षात्मक तरीके से इसे खेला, सम्मान दिया। सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर गुल्लेंग पर टप्पा फेंका था और इसे बैकफुट पे जाकर तीनों स्टंप एक्सपोज करके वो जो एक गैप है थर्ड मैन ऑन पॉइंट के बीच, उस गैप को ढूंढने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा नाकामयाब कोशिश। 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन स्पेल की भी समाप्ति होते हुए एक बढ़िया गेंदबाज प्रतीक माने द्वारा 3 ओवर में महज 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो बदलाव होता हुआ एंड में, और बदलाव हुई है गेंदबाजी में भी। तेज तपतपाती धूप इस खूबसूरत से मैदान पे, एनएल कॉम्प्लेक्स दहिसर ईस्ट में एक बार फिर देर देर से
जुड़े हुए दर्शकों का स्वागत करता हुआ मैं सुनील रॉय मौका 365 टसल प्रीमियर लीग में, जहां पर एक बेहतरीन मुकाबला खेला जा रहा है दो बेहतरीन टीमों के बीच, रेजिंग बुल्स और मैवरिक्स के बीच। हालांकि खेल के इस स्टेज पर, इस पड़ाव पर अब तक रेजिंग बुल्स हावी होता हुआ मैवरिक्स पर, लेकिन अभी भी मैवरिक्स में कई बल्लेबाज, कई दिग्गज बल्लेबाज बल्लेबाजी करना बाकी, काफी कुछ खेल बचा हुआ इस मुकाबले में। तो पहली बार इस पारी में स्पिनर को बुलाया गया है, स्मितेश पाटिल, ऑफ स्पिनर गेंदबाज। अगली गेंद हल्की सी ही पटकी हुई गेंद और इसे सही नसीहत दे दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन के लिए। जी हाँ, मार्जिन ऑफ एरर इस फॉर्मेट में बिल्कुल भी कम है। जैसे ही देखा, हल्की सी पटकी हुई गेंद, बहुत जल्दी ही पोजीशन में आ गए थे उस शॉट को खेलने के लिए बल्लेबाज क्षितिज। फिर तेज गति की ये गेंद ऑफ स्टंप पर इसे खेला है ऑन साइड में। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का आसान सा मौका। बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं स्मितेश, ऑफ स्पिनर के गेंदबाज। और अब तक 4 गेंदों, 4 अलग अलग गेंदें फेंकी गई है। वेरिएशन देखने मिला है इस ओवर में अब तक। फ्लैटर डिलीवरी, बैकफुट पे जाकर कट कर दिया। बल्ले से बहुत ही बढ़िया आवाज जरूर आई गेंद टकराने के बाद, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत बढ़िया आप शॉट खेलते हैं लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाते, वही हुआ। इसे कट करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद गई कवर के खिलाड़ी के हाथ में। 1 रन लेने का मौका। आखिरी गेंद, आमंत्रण दिया था बल्लेबाज को, फ्लाइटेड डिलीवरी। बल्ला भाजा जरूर, लेकिन अपना संतुलन खो बैठे थे वहां पर बल्लेबाज। बहुत पहले ही मन बना लिया था, आखिरी गेंद है, बड़ा शॉट खेलना है। गेंद टकराई किल्लियों से और तीसरे विकेट का पतन। वेविक्स का स्कोर 6 ओवर के बाद 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब इस विकेट के बाद अब धीरे धीरे दबाव बढ़ता हुआ मैवरिक्स के बल्लेबाजों पर। रिक्वायर्ड रेट अब 12.57 का, 84 गेंदों में अब 176 रनों की जरूरत। और नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, कप्तान मैवरिक्स के। तो रेजिंग बुल्स के कप्तान ने खेली थी एक कैप्टन नॉक कप्तानी पारी। कुछ उसी प्रकार की पारी की यहां पर जरूरत मैवरिक्स को। एक कैप्टन नॉक खेला था अपने पिछले मुकाबले में, सिद्धार्थ ने अकेले शेर की तरह दहाड़ा था, लेकिन उन्हें साथ नहीं मिला था अपने साथियों का। इस मुकाबले में देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं, अपने टीम के लिए जरूरत है एक बेहतरीन पारी की, और उम्मीद भी हम करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर
विजय है नए गेंदबाज, मध्यम गति के गेंदबाज। एक अनऑर्थोडॉक्स एक्शन इनका। जिस प्रकार का इनका एक्शन है, ये नेचुरली गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और पहली गेंद मिडल स्टंप पर टप्पा गिरने के बाद ऑन द बॉडी आई थी राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और उसे बढ़िया कलाइयों के सहारे मोड़ दिया था ऑन साइड में एक रन लेने के लिए। अगली गेंद एक बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप के काफी बाहर, बल्लेबाज ने जाने दिया इसे विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर हल्की सी लाइन और लेंथ में परिवर्तन जरूर किया था, लेकिन नतीजा वही, वाइड गेंद। तो जी हाँ, जिस प्रकार का इनका एक्शन है, हम बात कर ही रहे थे कि नेचुरली गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और वही हुआ। अगर आप मिडल में पिच करेंगे तो गेंद राइट हैंडर को छोड़ते हुए निकल जाएगी, लेकिन इस बार लेंथ में परिवर्तन, हल्की सी छोटी पटकी हुई गेंद ऑलमोस्ट पांचवें स्टंप पर अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज ने इसे सुरक्षित बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन लेने का मौका नहीं। फुलर लेंथ की गेंद, देवशीष वहां पर खिलाड़ी कोई भी गलती नहीं किया, स्लॉट डिलीवरी थी। जैसे ही उनके पाले में गेंद मिला, बल्ला चलाया था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन निराश हताश सिद्धार्थ मैवरिक्स के कप्तान पवेलियन लौटते हुए। बढ़िया पारी खेला था पिछले इनिंग में, लेकिन आज कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए, नाखुश होंगे अपने आप से और उस शॉट सिलेक्शन से भी। तो बिना खाता खोले कप्तान की वापसी पवेलियन की ओर, और इस बड़े विकेट के बाद रेजिंग बुल्स इस मैच में अपना एक चालू है ना, ठीक है। 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर गतिमान, और विजय द मैन विद गोल्डन नाम अपने पहले ही ओवर में एक बड़ी मछली हाथ लगी है उन्हें। बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं अनिकेत, एक हरफन मौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर। गेंदबाजी तो बेहतरीन थी इनकी, एक बेहतरीन स्पेल फेंका था इन्होंने अपनी टीम के लिए, और चुनौती है इनके लिए अपने टीम को इस मझधार से निकालने की। जी हाँ, ये विकेट अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि आप पहले ही गेंद से बड़े शॉट खेल सको। हमने वही देखा था राकेश के पारी में भी, अपना समय लिया था, शुरुआती के 5-10 गेंद उन्होंने सम्मान दिया था गेंदबाज को, मेरिट पर खेला था, और उसके बाद बड़े शॉट खेलना शुरू किया था। तो एक किफायती ओवर की एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर गेंदबाज विजय द्वारा। 7 ओवर के बाद मैवरिक्स का स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
और जैसे जैसे इस ग्राउंड पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ उसी प्रकार रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ता हुआ। स्मितेश पाटिल और एक और विकेट उनके नाम। क्षितिज एक छोर पर वो खड़े थे, लेकिन लगातार अंतराल में विकेट गिर रहे थे। दबाव बढ़ रहा था उनके ऊपर भी, और उस दबाव को रिलीज करने के प्रयास में खेलना चाहते थे इनसाइड आउट। ऑफ स्टंप पर गेंद गिरने के बाद हल्की सी अंदर आती हुई और लेग स्टंप पर गेंद टकराई। एक अच्छी पारी का अंत होता हुआ। हाँ, मेरा ही है। ओके। So the half team has walked back to the hut, and this is some collapse. 46 for 5, 7.1 overs. New batsman is Himanshu Batra. Good delivery, quicker one on the pads, using his wrist, clipping it on the onside, and off the mark straight away. 47 for 5. Though half team is back in the pavilion, Mavericks, they will have to find some inspiration to fight back in this game. It's still not the end. And the kind of shots they will like to play, they will have to play. Aniket plays with a hard hand over the baller's end. A better fielding effort required there by the fielder at long off. With the help of 4, it's 51 for Mavericks. Excellent delivery. This is good bowling by Smitesh. Where is his length, his line, and that's what makes him unplayable at the moment. Floated delivery and a brilliant connection between bat and ball. Flatter as you like. Aniket More, he will not go back without putting on a fight. He will have to be there till the very end for Mavericks. And the bowler having a last laugh. One shot too many. And that's an end of a cameo from Aniket, which lasted only for 7 balls. He's gone back to the pavilion after scoring 10. 8 overs gone, 57. And the Mavericks, they are 6 down. What a game Smitesh Patil is having. Has bowled 2 over, conceded 18, but got 3 wickets. Vijay will continue, and Mavericks, they are
in trouble at the moment. Himanshu and Kunal Soni are the two batters out in the middle for them. He bowls a half tracker and cuts it away. Good shot. And talking about outfield, it's quite quick, lightning quick. So if you are able to find the gap, you will be rewarded some good runs. So boundary to start off the over. Another half tracker and the result is same. Bowler is not learning from his mistake and the batsman getting two back-to-back boundaries. तो फील्डिंग में बदलाव यहाँ पर अब थर्ड मैन के खिलाड़ी को डीप थर्ड मैन पे पोजीशन किया है. गुड लेंथ की ये गेंद हल्की सी रुक कर आई. बल्लेबाज के लिए इसे खेलना चाहते थे, मोड़ना चाहते थे कलाइयों के सहारे ऑन साइड में, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर टकराई. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. डॉट गेंद. काफी बाहर और अंपायर की दोनों बाहें खुलती हुई. वाइड का इशारा. हालांकि पहला ओवर जो फेंका था विजय ने, बढ़िया ओवर था, किफायती ओवर थी, लेकिन इस ओवर में कुछ ज्यादा ही प्रयास करने की जरूरत दिख रही है यहाँ पर गेंदबाज द्वारा. लेकिन ये बढ़िया गेंद ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ने कोई जोखिम न उठाते हुए इसे खेला रक्षात्मक तरीके से. बॉलर के हाथों में एक रन लेने के लिए, उसके बाद अगली गेंद एक बार फिर थर्ड मैन की दिशा में. खराब क्षेत्र रक्षण. जहां मात्र एक रन होने चाहिए थे वहां 4 रन दे दिया है. और ये इस ओवर में आने वाली तीसरी बाउंड्री, एक महंगा ओवर साबित होता हुआ अब तक विजय द्वारा. 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में और स्कोर हो चुका है 70 रन. आखिरी गेंद इस ओवर की. तो ऑलमोस्ट हर एक दिशा में अब गेंदबाजी कर चुके हैं. अगर ऑफ साइड हो, ऑन साइड हो, कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है जो कंसिस्टेंसी इन्होंने अपने पहले ओवर में दिखाई थी. ये बढ़िया गेंद और इस डॉट गेंद के साथ एक बड़े ओवर की समाप्ति. 9 ओवर के बाद अब मैवरिक्स का स्कोर है 67, 6 विकेट के नुकसान पर.
Play and a miss. A lucky escape this for the batsman. That misses everyone. Boundary in form of bye. Once again, a loopy delivery to the right hander, enticing him to come forward and go downtown. Once again, ball hitting the pads, and both the batsmen rotates the strike, takes single, 72 on the board. We are into the 10th over. Required rate 13.78 at the moment. अजय यहाँ बहुत बार ऐसा देखने मिला है कि रन और गेंदों का फासला देखकर बल्लेबाजों का हौसला परस्त हो जाता है, कम हो जाता है, और वो हौसले को बनाए रखना होगा यहाँ पर मैवरिक्स के बल्लेबाजों द्वारा। और क्या शॉट खेला है, कलाइयों का बेहतरीन उपयोग, और बहुत ही बढ़िया। कोई भी खिलाड़ी नहीं, मात्र एक खिलाड़ी फाइन लेग के क्षेत्र में, और एक बड़ा गैप मौजूद ऑन साइड में, उस गैप को भेदा है हिमांशु बत्रा। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी किए हैं इस पारी में अपने टीम के लिए। दाद देनी होगी गेंदबाज स्मितेश की भी, डरते नहीं है फ्लाइट देने से, आमंत्रण करते हैं बल्लेबाज को कि आप आइए और मेरे खिलाफ बड़ा शॉट खेलिए। और क्यों ना करें, जब आपके पास एक विशाल लक्ष्य है तो आप एक एक्सपेरिमेंट, एक रिस्क उठा सकते हैं। वही करते हुए स्मितेश पाटिल, हालांकि अब तक अपना तीसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। दो बेहतरीन ओवर घटे थे, लेकिन इस ओवर में अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, ऑलमोस्ट जिस प्रकार टेस्ट मैच में स्पिनर गेंदबाजी करता है, उसी लेंथ, उसी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए स्पिन की उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज, स्पिन हुई नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 10 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 77 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी 77, 10 overs gone, 77 for 6।
तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अब शुरुआत हो चुकी है। 11वीं ओवर की 77 रन बोर्ड पर है। इसे कट कर दिया है। बाहरी किनारा जरूर लगा था बल्ले का, लेकिन वहां पर बाउंड्री पर थर्ड मैन के खिलाड़ी तैनात। मात्र एक रन लेने का मौका। तो अगर अब हिमांशु की भी बात करें तो बढ़िया बल्लेबाजी किए हैं, हालांकि इनके ज्यादातर की स्ट्रोक विकेट्स के पीछे बने हैं। बैकफुट पे एक अच्छे खिलाड़ी नजर आते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज नजर आते हैं। हल्की सी पैरों की तरफ फेंकी गई ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर उनके पैड पर टकराई। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी दौड़कर गेंद को फील्ड किए, लेकिन जब तक वो फील्ड करते गेंद को लौटाते बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए हैं। बढ़िया क्रिकेट। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई ऑन साइड में दौड़कर पूरा करना चाहते थे एक रन, लेकिन बढ़िया कॉल वहां पर कुणाल द्वारा। सही समय पर हिमांशु को भेजा सुरक्षित अपनी क्रीज पर। रन लेने का कोई मौका नहीं, कोई विकेट नहीं। गेंद हवा में कैच होना चाहिए और हो भी जाएगा। एक बार फिर चीकी शॉट खेलने का प्रयास, इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गेंद में वो गति नहीं थी जिस गति की अपेक्षा कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज हिमांशु। और सीधा दे मारा स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में। एक समय को ऐसा लगा गेंद उनके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन अंत समय पर जंप किया और गेंद को अपने हाथों में दबोचा। 7वें विकेट का पतन। हिमांशु बत्रा की एक छोटी सी पारी 15 रन की समाप्त होती हुई। और अब नए बल्लेबाज आते हुए अथर्व। एक ऑफ स्पिनर, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अब उनका रोल बदल चुका है एज अ बैट्समैन। अपने टीम को एक अच्छे नंबर्स में लेकर जाना होगा। वो नंबर्स की बात करें तो वो फिलहाल मात्र 79 रन बोर्ड पर लगे हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन क्रीज पर और गेंदबाजी हल्की सी दिशाहीन। यहाँ अगर ये गेंद राइट हैंडर बल्लेबाजी फेस करते तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वाइड गेंद। फुल टॉस की ये गेंद घुटने पे जाकर इसे डाउन द ग्राउंड खेला था। बहुत ही बढ़िया अंदाज में खेला गया ये शॉट, लेकिन गैप ढूंढने में नाकामयाब। एक रन लेने का मौका, एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए अथर्व। 11 ओवर के बाद अब मैवरिक्स का स्कोर है 81 रन 7 विकेट के नुकसान पर। देवशीष को गेंद सौंपा है कप्तान राकेश ने।
और पहली गेंद बहुत ही बढ़िया टप्पे पर फेंकी गई गेंदबाज द्वारा, और इसे रक्षात्मक तरीके से सम्मान देते हुए इस गेंद को खेला कवर के खिलाड़ी के हाथ में। कोई रन नहीं। लेग स्टंप के काफी बाहर, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर द्वारा। बहुत ही कम समय था रिएक्ट करने का। यकीनन अगर हल्के से लेट होते तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाती। अंपायर का निर्णय, वाइड का इशारा। बहुत ही बढ़िया शॉट। एक बार फिर खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर खिलाड़ी द्वारा, इस बार डीप थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है जब आप मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं और आपके पास काफी रन हैं डिफेंड करने के लिए, आपके इक्के दुक्के खिलाड़ी थोड़े से कैजुअल अप्रोच में नजर आते हैं, और वही हुआ। थर्ड मैन के खिलाड़ी हल्के से लेजी अप्रोच में उस फील्ड को फील्ड करते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बढ़िया गेंद देवशीष द्वारा। इस बार राइट आर्म अराउंड द विकेट आए थे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। पिछली गेंद पर जैसे ही देखा बल्लेबाज को हल्की सी रूम मिलती है तो वो ऑफ साइड में बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया सोच गेंदबाज द्वारा भी। रूम नहीं देना चाहते हैं, क्रैम करना चाहते हैं बल्लेबाज को। बढ़िया गेंद, और एक बार फिर उसे सुरक्षित और रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए बल्लेबाज अथर्व। तो धीरे धीरे मैवरिक्स के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार इस मैदान पर बादल मंडरा रहे हैं, उसी प्रकार मैवरिक्स के ऊपर एक संकट का बादल मंडराता हुआ। और क्या शॉट खेला है अथर्व के बल्ले से, एक धंधनाता हुआ शॉट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए उनके बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा बाउंड्री। और कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत भी है मैवरिक्स को। 49 गेंदों में 129 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रेट 15.80। बढ़िया क्रिकेट। एक बार फिर बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आ गए थे उस शॉट को खेलने के लिए। बैकफुट पे जाकर इसे मात्र पंच कर दिया था खिलाड़ी वहां पर मौजूद पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे, माफ कीजिए, शाहिद। 1 रन लेने के बाद अब स्कोर हो चुका है 91 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति। फुलर लेंथ ये गेंद राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर वैभव अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर फेंकते हुए। पहला ओवर बेहतरीन ओवर घटा था, मात्र 4 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया था। अपने दूसरे विकेट की तलाश में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज और अथर्व, इनका बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जारी। अगली गेंद पैरों पे जाकर टकराई और रन लेना चाहते थे कुणाल, लेकिन
नकारा अथर्व ने। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी मैवरिक्स को कि रिक्वायर्ड रेट आउट ऑफ रीच ना होने दिए जाए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार संपर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं। जी हाँ, मैच अब उस मोड पे आ चुका है मैवरिक्स के लिए जहां पर आपको बड़े शॉट खेलने ही होंगे। अब तक बढ़िया कुछ शॉट लगाए थे अथर्व ने ऑफ साइड में, लेकिन इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास। बल्ला आखिरी समय पर मुड़ता हुआ बॉटम एंड ऑफ द बैट और खिलाड़ी कवर पर मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। 8वें विकेट का पतन और अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे हैं कल्पेश पाटिल। टसल प्रीमियर लीग 2023 आज तीसरा दिन इस बड़े मुकाबले का, बड़े टूर्नामेंट का माफ कीजिए, जो कि खेला जा रहा है रेजिंग बुल्स और मैवरिक्स के बीच। रेजिंग बुल्स ने टॉस जीतकर बनाए थे 218 रन। जी हाँ, एक विशाल सा स्कोर सेट किया था टॉस जीतने के बाद। दाद दुनी होगी उनके बल्लेबाजों द्वारा। संदेश, संकेत और कप्तान राकेश जो कि नाबाद रहे थे, और उसके जवाब में मैवरिक्स की पारी लड़खड़ाती हुई। अब तक 12.3 ओवर का खेल हो चुका है, 91 रन बोर्ड पर लगे हैं, 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट कर जा चुके हैं। So Vaibhav Parmar once again strikes for his team, gets his second wicket. All he needs to do is bowl 2 good deliveries and it's all out for Mavericks. Various Mavericks 2 batsmen, Kalpesh and Kunal. They will have to be at the crease till the very end, and at the same time, they would be hoping to score at a good rate, even though they know it's getting out of their reach. But the fight, the tussle, is what we expect from the teams like Mavericks. The fighting spirit has to be shown by this team and by these two batters as well. Don't let your shoulder down no matter what. And after a halt in a play, we can see change in a bowling. For some reason, Vaibhav is off the bowling and it's captain who has a ball in his hand. Well, it's a question, is there anything that he cannot do? Only he can tell you. Rakesh Putran is on the attack. He has to bowl 3 balls to complete this over. And it starts off bowling a beauty of a delivery. How did that miss the stump? Way outside the off stump and just opens the face of the bat, steers it. I beg your pardon, umpire believes there was no bat involved. Wide is the signal. 2 runs will be added to the tally. 93 on the board. Mavericks batters, they have to make sure that even they fall short of their target. They have to inch closer to the target to make sure that the net run rate doesn't get spoiled or doesn't go in a negative mark. 93, still the score, dot ball.
Last ball of the over, a quicker delivery onto the leg and tucked it on the onside for a single. End of over 13, 94 for loss of 8 wickets. धीरे धीरे जैसे जैसे मैच अग्रसर होता हुआ, प्रोग्रेस होता हुआ, हमारे दर्शक भी ऑनलाइन जुड़ते हुए, नंबर्स बढ़ते हुए, यूट्यूब हो चाहे वो क्रिक हीरोज का एप्लीकेशन हो, मौका 365 टसल प्रीमियर 2023 का क्रेज बढ़ता हुआ पूरे मुंबई में। टॉस की ये गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर तैनात, कप्तान तेजी से गेंद पर झपटे, लेकिन उनसे भी तेज दोनों ही बल्लेबाज विकेटों के बीच। बढ़िया गेंद, प्ले एंड मिस। ड्राइव करना चाहते थे, बाल बाल बचे, गेंद का बल्ले का अंदरूनी या फिर बाहरी किनारा नहीं लगा। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। देवशीष गेंदबाजी करते हुए और चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैवरिक्स की इस पारी को समेटे और एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर रेजिंग बुल्स। बढ़िया टप्पे पर गेंद पड़ी, लेकिन लाइन खराब, डाउन द लेग, और बल्लेबाज ने इसे जाने दिया। विकेट कीपर के हाथों में वाइड का इशारा। डिफेंसिव स्ट्रोक सीधे कवर के खिलाड़ी के हाथ में। एक और डॉट बॉल, और अब 39 गेंदों में चाहिए 123 रन। काफी दूर मंजिल नजर आ रही है मैवरिक्स के लिए। जगह से ही ड्राइव करना चाहते थे, फुटवर्क की कमी नजर आई उस शॉट में। बहुत पहले ही मन बना लिया था इसे खेलना है ऑफ साइड में, लेकिन गेंद के लाइन में बिल्कुल भी नहीं थे। कोई का डिलीवरी स्टंप पर फेंकने का प्रयास, लेकिन पैरों पर फेंक दिए, उसे कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में। कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। विकेट कीपर दौड़कर गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन लेने का आसान सा मौका। स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 100 की तरफ। स्कोर अभी है 97 रन, 14 ओवर गतिमान। आखिरी गेंद इस ओवर की देवशीष चौहान द्वारा। गुड लेंथ थी ये गेंद, बैकफुट पे जाकर इसे एक बार फिर कट कर दिया है ऑफ साइड में। हल्के से फंबल जरूर हुए थे वहां पर, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। शाहिद ने फील्ड किया गेंद को। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मैवरिक्स का स्कोर है 98 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। स्मितेश पाटिल, इनका ये आखिरी ओवर इनके स्पेल का। 3 विकेट झटके हैं, 2 विकेट चाहिए और 2 विकेट बाकी हैं मैवरिक्स के भी। बाहरी किनारा, एक मौका जरूर बनाया था, लेकिन साथ नहीं मिला विकेट कीपर का।
चौथा विकेट हो सकता था, लेकिन फंबल हुए विकेट कीपर, जीवन दान मिला बल्लेबाज को। और धीमी गति की ये गेंद, बिल्कुल भी स्पिन नहीं, इस गेंद पर सीधी रहती हुई गेंद, कट करने का प्रयास, डॉट गेंद। लगातार 3 डॉट गेंद, और अब इस ओवर में दबाव बनाते हुए खराब गेंद, और इसे मात्र फ्लिक कर दिया है, ग्लांस कर दिया है, माफ कीजिए। बल्ले का अंदरूनी किनारा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। 108, माफ कीजिए 102 रन, 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 2 गेंदें बाकी स्मितेश पाटिल के स्पेल में। क्या वो पहले गेंदबाज बनेंगे मौका टसल प्रीमियर लीग में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज? विकेट की खोज में एक बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा, स्लीप में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। थर्डमैन की खिलाड़ी इनसाइड द सर्कल, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक बार फिर 4 रन। से रक्षात्मक तरीके से खेला था, सॉफ्ट हैंड से खेला था, ऑफ साइड में मारते ही दौड़ चुके थे 1 रन के लिए। अगर पहले ही अटेम्प्ट पे अगर फील्ड कर ली जाती इस गेंद को, तो एक मौका बन सकता था रनआउट के रूप में। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। 15 ओवर के बाद अब स्कोर है 107 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन स्पेल की समाप्ति स्मितेश पाटिल द्वारा, 4 ओवर में खर्च किए 32 रन, छटके 3 बढ़िया विकेट्स। और अब धूप बिल्कुल से गायब हुई हो चुका है यहाँ पर। एक बढ़िया वातावरण एनएल कॉम्प्लेक्स दहिसा ईस्ट में। कप्तान राकेश गेंदबाजी के लिए तैयार। 2 विकेट के खोज में राकेश पुत्रन। उल्टॉस की ये गेंद, माफ कीजिए डाउन द लेग जाती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा। फिर कुछ उसी प्रकार की गेंद, नतीजा वाइड गेंद। लगातार 2 एक्स्ट्रास इस ओवर में अब तक। स्लॉट में गेंदबाजी, और बहुत ही बढ़िया बल्ला चलाया यहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश ने। गेंदबाज के सिर के ऊपर से कोई भी मौका नहीं लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को उस गेंद को रोकने का। 4 रन।
पटकी हुई गेंद ये तेजी से आई है बल्लेबाज के लिए, बैकफुट पे जाके इसे पंच कर दिया है ऑफ साइड में। पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का। बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी। हल्की सी वेरिएशन की थी गति और लेंथ दोनों में ही, लेकिन बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं। फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद हवा में इनसाइड आउट, से खेला चाह रहा था कवर के ऊपर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट जो कि डीप में है तैनात। एक बार फिर तेज गति की ये गेंद, स्टंप्स को अटैक करने का प्रयास गेंदबाज द्वारा। बल्लेबाज एक बार फिर सुरक्षित उस गेंद को बैक टू द बॉलर्स हैंड खेला। डॉट गेंद। डीप कवर के खिलाड़ी थोड़े से मुश्किल में नजर आते हुए। जी हाँ, आसान नहीं है इस तपतपाती धूप में बल्लेबाजी या फिर फील्डिंग करना। Quicker delivery, and he has driven down the ground, but batsman will have to settle only for one. And that's an end of over 16, 116 on board for loss of 8 wickets. Shahid, the 13 years old youngster, is back into the attack.
He has been wicketless so far and probably would be eyeing to get a couple under his name and wrap the things off. Has bowled 2 overs so far, conceded 23. Now he is bowling into the tailenders at the moment, Kunal and Kalpesh. Half tracker delivery in the gap, couple of bounce over the ropes. A run making opportunity for the batsman, and they have scored a boundary of the very first ball in this over, putting the pressure on the youngster. Better length, but he struggled to find his length. I beg your pardon, find his mark, in fact, as he has overstepped third time in this inning. Apart from those extras, this guy has been exceptional. Very well bowled. Almost on the sixth stump. Batsman had to fetch for that shot. He reached out at it and played it down the ground, stayed in the hands of fielder at long on. Deva. This is good bowling. This one gives a bit tad low. Batsman was looking to open the face of the bat and steer it down the third man, but no contact. Wicketkeeper does the rest. Excellent delivery. Almost got this man. Would have been the first one for him, Shahid Sharif. So in every over, he struggles for initial 1 or 2 balls, and after that he makes a solid comeback. And that's the story has been for him. Full toss delivery. Fielder in the deep. Only one can be taken. One will be taken. Bowling his third over, Shahid Sharif, the young lad, looking to take his first wicket. In the air. Will this be the first wicket for him? Yes, it is. He is delighted, and why not? A maiden wicket for him in Mauka's 365 Tussle Premier League. With that, it's 9 wickets down for Mavericks, 123 on board after 17 overs. To finish the things off, Pratik Mane is into the attack. He will be bowling his last over of his spell. Has bowled 3 so far, conceded 12, taken 2 wickets.
Pratik to Kalpesh. Quicker delivery. Gets right behind the line of the delivery and plays it defensively. Straight back to the bowler for no run. Outside the off, was looking to slash it to the cover. Toe end of the bat. No run taken. We still required 96 of 16 balls. Good delivery. Another pacey delivery to the right-hander. Came in sharply and blocking it. Protecting his stumps, protecting his wicket. Kalpesh Patil playing him out. This time bowler misses his radar by a few inches, goes down the leg. Wide is the signal. Another quicker delivery. This was on the leg stumps. He waits for it and plays it with the soft hands. No fielder at square leg. Wicketkeeper had to run to his left. Fields it. Gives the ball back to the bowler. Run taken. Pratik Mane still hunting for that wicket. Excellent delivery and well played by the batsman. Number 11, Tushant Shetty. Yeah, he's getting a taste of his own medicine at the moment. Tushant. Last ball of Pratik's spell. What a delivery. Hurried to the batsman and the extra bounce made the batsman poke at it. He was in uncomfortable position to play it. End of an exceptional spell by an exceptional bowler, Pratik Mane. 4 overs gone, conceded only 14 and got 2 crucial wickets of Mavericks batsmen. 18 overs gone, 125 for 9. बारह गेंद 94 रन, एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर रेजिंग बुल्स।
जी हाँ, अगर विकेट प्राप्त करते हैं बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर सकेंगे रेजिंग बुल्स। उसी उम्मीद से गेंदबाजी के लिए चले विजय। पहली गेंद एक टीजिंग लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, अनिश्चितताओं के गलियारों पर गेंदबाजी करते हुए, एक ऐसा गलियारा, एक ऐसा लेंथ जहां पर बल्लेबाज दोहरे माइंड में होता है, दोहरे सोच में होता है कि मैं खेलूं इसे फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे। तो जिस प्रकार की अब बल्लेबाजी हो रही है मैवरिक्स की, प्रतीत तो यही होता है कि अब उनका क्रिकेट 20 ओवर खेलना है। लेकिन ये सोच कितनी सही है वो तो वही जाने, क्योंकि अगर आप 20 ओवर भी खेलते हैं और अगर आपके रन बनते भी नहीं हैं तो आपके रन रेट पर कोई बदलाव नहीं होने वाला। रन जरूरी है, चाहे वो 5 रन हो 10 रन हो। भले आप अगर 20 ओवर पूरा भी खेल लें और अगर आपके रन जितने अभी बने हैं उतने ही हो, तो आपके रन रेट में कोई भी इजाफा नहीं होने वाला। और ये खराब विकेट कीपिंग मैं कहूंगा। अब तक बढ़िया नजर आए थे विकेट के पीछे, लेकिन ऐसा लगने में ऐसा नजर आया कि वो रेडी ही नहीं थे उस गेंद के लिए, या फिर वो ब्लॉक हो चुके थे, उनका व्यू ब्लॉक हो चुका था। हालांकि 22 के रूप में 4 रन मैवरिक्स को। जगह से इसे खेलने का प्रयास, एक और डॉट गेंद। 130 रन हो चुके हैं मैवरिक्स के, 8 गेंदें बाकी और लक्ष्य है 89 रन, 89 रन ऑफ 8 बॉल्स। लास्ट बॉल इस ओवर की, और अब माफ कीजिए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 19 ओवर के बाद अब स्कोर है 130 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। अब महज औपचारिकता रह चुकी है इस मुकाबले में। मैटर ऑफ 6 balls and it will be the second victory for Raging Bulls. And to finish the things off, it's the captain from Raging Bulls, Rakesh, who starts off bowling a quicker delivery to the right-hander. Second delivery was looking to play it through the cover for no run. And that's a timber. Wicket for the skipper. And that sums up the story for Raging Bulls. A big, big victory this for them against Mavericks. They won by the massive 88 runs, 130 all out. And who, other than the captain himself, Raging Bulls, finishes the things off with a victory in his kitty, with a wicket in his kitty.
So man of the match in this contest. Rakesh Putran it is. The skipper from Raging Bulls. Excellent with the bat and exceptional with the ball. What a game he had. All right, then I have the man of the match of the moment, Rakesh Putran. How does it feel when the things go well, right from the winning the toss till winning the match? Yeah, first of all, that was a change. I won the toss. Uh, I had confidence on my team, to be very honest. Yeah, as I told you in the start, we are experimenting, wherein we are batting first on the damp wicket. Uh, so the openers played their part. It was a very good start. I knew that my job will be to steady the innings initially, and then maybe I can go for the hit, because I know that we had very nice batting lineup in the end who can hit the ball hard. So I did my part, wherein I kept the wicket for some time, and then maybe I explored at the last. Did the surface play differently for Mavericks? Because you guys putting on a big total, 218, I guess, and then bundling the opponent for 130. No, I don't think pitch played any part. I think the pressure was minding on them, and the ball was ball in good areas, to be very honest. And would like to take 1 minute and appreciate Shahid, who is such a young lad. I think he's 11 years, if I'm not wrong, 13 years old, and he has bowled really well. Even batting, you saw, I was having confidence in him that I can give a single to him and he will not be putting a dot ball at the end. So yeah, that's the confidence of our team currently. So I'm happy with that. So happy man, congratulations once again. Go well in the tournament. So that's all from the center. We will head for the second match.
All right, then, welcome back to the second game of day 3, which is being played between Saturn Warriors versus Dark Knights, where Warriors captain have won the toss and they have decided to bat first. Out in the middle are the two batters, Amit and Ankit. And Abbas is the man who has the ball in his hand. Hitting a right line, right length at the moment. Abbas giving nothing to the batsman to score big runs, keeping the things tight at the moment, and that's what Dark Knight's captain hoped for before handing the ball to Abbas. Good delivery, fuller length delivery, slanting down the leg. Enough bat on the ball to take the ball to the ropes for a boundary at fine leg region where no fielder being positioned. And that's the first boundary of this inning, and Amit is off the mark. Good delivery, but finds the fielder straight in the hands of fielder at mid wicket. Full toss delivery, driven down the ground. Throw at the striker's end would have been a different story. Yes, no between the batters, but eventually both the batsmen are home safely. No runs taken, no damage done. Last ball of the over, drifting down the leg. Bowling with the new ball, it's hello. It's always a task for a bowler. Good connection between bat and ball, but brilliant fielding by the fielder at point, and that allowed the batsman, in fact restricted the batsman only for one. And of the very first over, score is 8 for none. Loud shower of LBW, probably going down the leg. Rothin is the bowler. चलिए एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा मैं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का, खिलाड़ियों का, समर्थकों का, जो भी प्रस्तुत एनएल कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत से मैदान और जो भी हमारे दर्शक ऑनलाइन ये मुकाबला देख रहे हैं, मैं सुनील रॉय आप सभी का अभिनंदन करते हुए मौका 365 टसल प्रीमियर लीग 2023 दूसरा सीजन
तीसरा दिन और छठा मुकाबला सैटर्न वॉरियर्स और डार्क नाइट्स के बीच खेला जा रहा, जहां पर टॉस जीता और वॉरियर्स के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनका। बढ़िया गेंद, लेकिन काफी बाहर ऑफ स्टंप के जाने दिया इसे। सुरक्षित विकेटकीपर के दस्तानों में वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। खराब गेंद, मशक्कत करते हुए इस समय गेंदबाज अपनी लेंथ और अपनी लाइन को ढूंढते हुए लगातार दो डॉट, माफ कीजिए, दो वाइड गेंदें, दोनों ही ऑफ स्टंप के काफी बाहर। फुल टॉस की ये गेंद, फाइन लेग के खिलाड़ी इनसाइड द सर्कल थे, स्कूप कर दिया है इसे। कोई भी मौका नहीं खिलाड़ी को गेंद को रोकने का। 4 रन। ये बढ़िया बल्लेबाजी, जैसे ही देख रहे थे कि गेंदबाज जूझ रहे हैं अपने लाइन और लेंथ को लेकर। दो गेंदें फेंकी थी, हाफ ट्रैकर की ये गेंद, और एक अनुमान लगाया था कि अगली गेंद फुलर लेंथ की होगी और वही किया। फुल टॉस की ये गेंद और इसे सिर्फ स्कूप कर दिया था फाइन लेग और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के बीच से 4 रन के लिए। बढ़िया गेंद और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, काफी तेजी से गेंद कवर के खिलाड़ी के हाथ में गई। एक बढ़िया मुकाबला होने वाला है ये। दोनों ही बेहतरीन टीम, डार्क नाइट्स और सैटर्न वॉरियर्स। गेंद उनके पाले में और एक एक्सटेंशन ऑफ आर्म देखने को मिला यहां पर बल्लेबाज द्वारा। फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं किए थे, लेकिन पावर, ताकत इतनी कि आसानी से गेंद ट्रेवल कर रही थी, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। एक बार फिर लेग स्टंप को छोड़ते हुए ये गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में, जहां पर कप्तान आज खुद विकेट कीपिंग कर रहे हैं अर्जुन, डार्क नाइट्स की तरफ से। निसंदेह नो बॉल होगी। जी हाँ, यकीनन गेंदबाज के हाथों से छूट गई थी। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट की डिलीवरी बल्लेबाज अंकित के लिए। एक और खराब गेंद और इसे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर वाइड का इशारा, फ्री हिट जारी रहेगा। गेंदबाज का संघर्ष जारी है इस ओवर में अब तक। अगली गेंद, लेकिन कहानी वही, नतीजा वही। एक और अतिरिक्त रन और वॉरियर्स का स्कोर हो चुका है 21 रन। आखिरी गेंद बाकी दूसरे ओवर की, फ्री हिट की डिलीवरी। एक और नो बॉल। इस बार अंपायर ने यकीनन ओवरस्टेप किया होगा गेंदबाज ने, तो फ्री हिट जारी था, फ्री हिट जारी रहेगा। हालांकि फ्री हिट का कोई भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। तेजी से गेंद उनकी तरफ आई और उससे भी तेज वो गेंद पर झपटे और
नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर एक एम लगाया था, एक इंटरेस्टिंग कॉल हो सकता था, टच एंड गो हो सकता था अगर गेंद गिल्लियों से जाकर टकराती। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 ओवर की समाप्ति, एक बड़े ओवर की समाप्ति, एक महंगे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद अब स्कोर है वॉरियर्स का 22 रन बिना किसी नुकसान के। Abbas will continue from Chhatrapati Shivaji Maharaj and starts off bowling freebie full toss, but driven down straight in the hand of bowler himself. Another play and miss. Living dangerously at the moment, batsman Amit fails to get bat on ball, struck on the pad. Not out, says the umpire. Direct hit was required at the non-striker's end. Both the batsmen scamper for a quick single. Brilliant bowling by Abbas. Bowling on a teasing length, tempting the batsman, offering some half volley, asking the batsman to play through the cover region. A quicker delivery, flatter delivery on the stumps, and played it with a soft hand. And as soon as the ball meets the ball, both the batsmen in no time rotates the strike. Last ball of this over, and he bowls it down the leg. Too many extras already for Dark Knights. Abbas, a true all-rounder. How one can forget his innings with bat. The very first match of Tussle Premier League, Dark Knights were up against Black Knights, and Dark Knights were in sort of trouble, and then walks in the man, a strong late Abbas, and he played a brilliant knock of 90 plus and takes his team to a decent total of 177. And courtesy their bowler, the Dark Knights won that match in the last over by 7 runs. Various talking about Warriors. This is the second game for them. In the very first match, they almost had that match in their pocket, but the batsman from Raging Bulls, Pratik, he had different ideas the other day, playing one of the best last two finish. प्रतीक ही था ना, मेरे को याद है. रेजिंग बुल्स का another no ball. The bowler is same. It's Rothin. So his struggle continues.
Free hit delivery coming up for batsman Ankit. Goes aerial. And that's a boundary. Another no ball. Full toss delivery. And it has gone over the ropes. Rathin certainly is not having a great day with the ball. And because he has bowled two Beamer, it will be interesting to see what is the umpire's call. As per the law, if you bowl two Beamer, but that has to be attacking the batsman's body line. Well, umpire thinks otherwise, and Rathin will continue. It will be a free hit delivery for batsman Amit. Plays it on the upper, but fielder at long off runs to his right, fields it, and returns the ball back to the bowler. Enough time for the batsman to take one. 39 on the board, 3.3 overs. Good cricket, this from both the batsmen. Taking their chances and on a good delivery, playing it down the ground. Good start this for Warriors. Has to be a wide. Way outside the off, miles outside the off. Rathin not having a good day with the ball. Need to find some mad inspiration to get back in this game. Shorter delivery. Pulls it and again. Fielder in the deep. Makes a mess of it. This is not acceptable from the team like Dark Knights. They are a far better team than this. Well, Warriors won't complain. They are off to a flyer. Came down the track. And it has gone out of here. Over the mid wicket. For a biggie. That's how you rub the salt into wounds. End of over 4. And that's a 15 some fashion for the team Warriors. जी हाँ, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए, घसते हुए, मैं कहूंगा छिड़क भी नहीं रहे हैं, ये तो रगड़ रहे हैं। 4 ओवर में 51 रन बना दिए हैं। कुछ खराब क्षेत्र रक्षण, कुछ खराब गेंदबाजी और सेटन वॉरियर्स के दोनों ही बल्लेबाज अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, खास तौर पर अमित जो कि 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 29 रन पर महज 17 गेंदों में।
वहीं अंकित अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जब भी मौका उन्हें बल्लेबाजी का मिलता है वो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर देते हैं। गेंदबाजी में बदलाव, लेकिन नतीजे अभी भी वही सेम। अब्बास को छोड़कर इनके एक भी गेंदबाज अब तक सही दिशा में गेंदबाजी नहीं किए हैं, और नतीजा ये कि 4 ओवर में वॉरियर्स के बने हैं 52 रन। ये बढ़िया गेंद बैकफुट पे ही रह गए थे। जी हाँ, क्रिकेट के लॉ में कहा जाता है कि अगर बल्लेबाज जब भी बैकफुट पे ही खेलता है तो वो एक आमंत्रण देता है, ट्रबल इनवाइट करता है खुद के लिए, कि आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस दफा अंपायर ने नकारा उस अपील को, नॉट आउट का इशारा। बल्ले का मुंह खोल दिया और इसे गाइड कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और तेजी से थ्रो किया था स्ट्राइकर्स एंड पर। कोई भी खिलाड़ी बैकअप के लिए वहां पर मौजूद नहीं। डीप के खिलाड़ी मिड विकेट के दौड़ कर आए, गेंद को रोका। तब तक दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित। ये बढ़िया गेंद एजे द्वारा, गुल्लेंग पर गेंद पड़ने के बाद, क्योंकि उनका नेचुरल एंगल है अंदर की तरफ आती है राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ी थी, टप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप पर आई, लेकिन बढ़िया कलाइयों का उपयोग बल्लेबाज द्वारा टक करके ऑन साइड में 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। और ये देखिए, कोई मौका नहीं वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी अब्बास को उस गेंद को रोकने का। मिनिमम एफर्ट ग्रेट रिजल्ट। कुछ इसी प्रकार का शॉट खेला था अंकित ने, मात्र दिशा दे दी थी उस गेंद को। गति है गेंदबाज के पास और उस गति का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने। शानदार क्रिकेट सेटन वॉरियर्स के दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 54 रन, ऑलमोस्ट अब 12 के रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए। सॉफ्ट हैंड से खेला था और इसे खेलते ही पहले ही मन बना लिया था, 1 रन लेना था। बढ़िया कॉल वहां पर नॉन स्ट्राइकर्स बल्लेबाज अमित द्वारा। जी हाँ, जानते हैं जब आप दोनों ही इतने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। और सही कॉल नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अमित द्वारा। बेहतरीन गेंद, गति भी और उछाल दोनों प्राप्त करते हुए गेंदबाज, और दोनों से ही मात देते हुए बल्लेबाज को। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 58 रन बिना किसी नुकसान के। Change of an end and changing bowling attack as well. Karan Nair is the bowler. Amit Guru will be facing him. 5 overs gone, 58 on the board.
for no wicket. So we have a change of wicket keeper as well. Abbas is the man behind the stumps. Right arm over to the right hander. Straight away on the money, attacking the stumps, and the batsman driven it down the ground, stayed in the hands of the fielder at long on. Just a 5 overs game and silence on the ground straight away. Well, that has been some onslaught from the both the batsmen of Warriors. What a shot! No need to run for those. Half volley delivery, leans forward, and he has screamed it through the cover for a magnificent looking boundary. This time coming from the willow of Ankit Chaudhary. It's gonna take some bowling effort to get rid of this partnership. Let's it go. Well, this has been story so far for Dark Knights. Too many extras. Almost an action replay of the previous delivery. Same line, same length, same batsman. Let's it go, and wicketkeeper does the rest. And the struggle for the bat bowler continues. 3 on the trot. We are into the 6th over, and already 17 extras have been conceded in this inning. 13 wides, 4 no balls. Better delivery. Almost around the off stump. Half volley delivery. Once again, batsman prods forward and defended it with a soft hand. But because the fielder is standing
almost on the edge of the 30-yard circle, enough time for the batsman to take one. Shot with on offer and punished. Shoulders are down for the Dark Knights fielder, and this is not a good sign to see. You're just playing the sixth over, and it is too early to be fielding with the body language like this. Once again, Karan getting some piece of advice from the captain and the wicketkeeper Abbas. A lot of homework needs to be done for the bowler here. Karan Nahaya bowling his first over. Have bowled only 4 deliveries, conceded 13 so far. Slot delivery. This time it was a delivery bowled on the off stump. He fetched it and played it on the onside. But the fielder at mid wicket runs to his left and restricted the batsman only for one. Six overs gone, 72 on the board for no wicket. So for the first time in this innings, spinners have been introduced. Govindraj, the off spinner, starts off with a dot ball. पटकी हुई है गेंद, बैकफुट पे जाकर इसे क्या सही तरीके से खेला है. कैच हो सकता था लेकिन खिलाड़ी ने मिसजज किया. बाउंड्री रोप के कुछ गज पहले ही खड़े थे. अगर वो एज पर खड़े होते तो गेंद सीधे उनके हाथों में होती. करारा प्रहार बल्लेबाज द्वारा 4 रन के लिए. एक बार फिर गेंद हवा में. इस बार विकेट हो सकता है और विकेट हो भी जाएगा. आखिरी समय तक नजरें गेंद पर और एक बैलेंस बनाए रखा, संतुलन बनाए रखा अपना. कुछ इंच रहते ही अपने आप को रोका बाउंड्री रेखा के अंदर और अमित के एक बेहतरीन पारी का अंत होता हुआ. साझेदारी खतरनाक नजर आ रही थी. उस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत थी डार्क नाइट्स को. और गोविंद राज
को मिली ये पहली सफलता। पहले गेंद का सामना कर रहे थे और बल्लेबाज, और पहली ही गेंद, खराब गेंद, बैकफुट पे जाके कट कर दिया। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। देवांश सिंह, ये बढ़िया गेंद, हालांकि पटकी हुई गेंद ये भी थी, लेकिन अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हुए इस दफा गेंदबाज। डॉट गेंद, 80 रन का स्कोर, 7वां ओवर गतिमान। क्या बल्लेबाजी रही है वॉरियर्स के बल्लेबाजों द्वारा। एक और पटकी हुई गेंद, कट शॉट खेलने का प्रयास एक बार फिर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं, कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद, 7 ओवर की समाप्ति, 80 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आठवां ओवर जारी है। प्रशांत निकम है गेंदबाज। स्कोर हो चुका है 85 रन, एक विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए डाउन द ग्राउंड खेल दिया है। लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए बढ़िया फुटबॉल स्किल्स दिखाया यहाँ पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गोविंदराज ने। थोड़े से लेट रिएक्ट जरूर किए थे, लेकिन अंत समय पर 3 बहुमूल्य रन बचाए अपने टीम के लिए। ये बढ़िया क्रिकेट, धीमी गति की ये गेंद, बैकफुट पे जाकर इंतजार किया इस गेंद का, और अंत समय पर बल्ले का मुख खोड़ा। इसे गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन गेंद में वो गति नहीं, मात्र 1 रन से संतुष्ट। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये देखिए जैसे ही गेंद और बल्ले की टकराई, बल्लेबाज ने गेंद की तरफ देखा भी नहीं। यहाँ कुछ इस प्रकार का कॉन्फिडेंस है अपने बल्लेबाजी पे, अपने शॉट सिलेक्शन पर। देवांश सिंह, उनके पाले में गेंद, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए।
डाउन द ग्राउंड खेल दिया एक बार फिर, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पिक्चर में। दिवान सिंह 200 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हुए महज 6 गेंदों का सामना किया, एक बाउंड्री एक सिक्सर की मदद से 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की समाप्ति। स्कोर है वॉरियर्स का 94 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 94 फॉर वन आफ्टर 8 ओवर्स। बहुत ही तेज तर्रार शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन फंबल हुए खिलाड़ी गेंद सीमा रेखा के बाहर। ताकतवर खिलाड़ी देवांश सिंह, अगली गेंद एक बार फिर स्वीपर कवर पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। अचानक से ये, माफ कीजिए अचानक क्या, ये तो 5वें गेयर पे उतरे ही थे बल्लेबाजी करने के लिए। पहला दूसरा गेयर इन्हें समझ में नहीं आता है, चौथे या 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हैं, वही कर रहे हैं। लगातार 2 डॉट गेंदबाजी में बदलाव किया था यहाँ पर कप्तान ने, डार्क नाइट्स के अर्जुन ने खुद गेंदबाजी का भार संभाला था, लेकिन क्या स्वागत किया उनका। वो कहते हैं ना, जब आप राजा को या वजीर को ही परास्त कर दें तो उनके अन्य साथी परास्त हो ही जाते हैं, वही करते हुए जब आप अपने विरोधी कप्तान पर ही दबाव बना देंगे तो उनकी टीम अपने आप दबाव में आ जाएगी। 102 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 8.2 ओवर का खेल हो चुका। ये बढ़िया गेंद, हल्की सी खींची हुई लेंथ में गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार बल्लेबाज की भी तारीफ करनी होगी। आसान नहीं होता जब आप इतने अच्छे लय में बल्लेबाजी करते हो, अपने आप को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन यही कुछ बताता है बल्लेबाज के माइंडसेट के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में। तो ना सिर्फ वो बड़े शॉट खेलते हैं, उन्हें पता है कि किस गेंद को रोकना है, किस गेंद को सम्मान देना है और किस गेंद पर प्रहार करना है, और ये एक अच्छे बल्लेबाज, एक बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। वही दर्शाते हुए देवांश सिंह, आखिरी गेंद इस ओवर की, और अलोंग द कारपेट खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 9 ओवर की समाप्ति, और वॉरियर्स का स्कोर है 103 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
Left arm bowler Prashant will continue. It's raining boundaries and sixes at the moment for Warriors. Here at NL Complex, there is the East at Mauka 365 Tussle Premier League 2023, Day 3, match number 6. A quicker, flatter delivery to right-hander. This time he was looking to smash it down the ground. Couldn't connect at all. Dot ball to start off. A quicker delivery, slanting down the leg. Wicketkeeper couldn't gather it, and that allows the batsman to steal one. 2 run, and the score moves up to 106. That's a wicket caught right in front of the stumps. Umpire had no hesitation at all to raise his finger up in no time. The left-hander strikes, and the batsman Ankit will have to go back to the pavilion after playing a decent hand. Gone back after scoring 25 of 23. 106 for 2. नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने श्रेयस. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच रिज्यूम होता हुआ. बहुत ज़रूरी हो गया था डार्क नाइट्स के लिए ये, उस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ना, और प्रशांत ने वही करके दिखाया.
एक सिट बैट्समैन को पवेलियन भेजा। और अगली गेंद एक बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी। टप्पा गिरने के बाद विद द आर्म ये गेंद गई थी, लेकिन प्रतीत होता है कि गेंद उनके ग्लव्स से जाकर टकराई। तो बल्लेबाज के खाते में ये रन, उसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। बढ़िया गेंद। जी हाँ, कई दफा देखा है विकेट लेने के बाद गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है, उसकी विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वही देखते हुए विकेट लेने के बाद बहुत ही बढ़िया टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रशांत, सटीक टप्पे पर। और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं देवांश जैसे बल्लेबाज को अपना हाथ खोलने का। लगातार 3 डॉट गेंद, और ये डॉट गेंद कहीं ना कहीं दबाव जरूर बढ़ाएगा बल्लेबाज के ऊपर। हालांकि अभी भी वो बहुत ही बढ़िया रन रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति, 107 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। गोविंदराज जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी। एक सफल गेंदबाज अब तक डार्क नाइट्स के लिए 1 ओवर में 8 रन देकर एक विकेट प्राप्त किए थे। साझेदारी को तोड़ा था, ओपनिंग सलामी साझेदारी को तोड़ा था। लेकर चले अपना दूसरा ओवर। पहली गेंद फुल टॉस की ये गेंद, इसे कवर ड्राइव खेल दिया है। खिलाड़ी डी पे तैनात अपने दाएं तरफ दौड़कर गेंद को जब तक फील्ड करते, गेंद को लौटाते, 2 रन लेने का मौका। और इस 2 रन के साथ श्रेयस ने अपना खाता खोलते हुए तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, और दोनों ही मैचों में अगर बात करें टॉस की, अगर हम बात करें तो दोनों ही कप्तानों ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला। और कहीं ना कहीं एक स्टैट्स जो होता है वो देखा होगा जरूर दोनों ही कप्तानों ने। स्टैट्स की अगर हम बात करें, एक एवरेज स्कोर की बात करें इस ग्राउंड पर, एनएल कॉम्प्लेक्स के इस खूबसूरत से ग्राउंड पर, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जो भी टीम ने बल्लेबाजी किया है, एक एवरेज स्कोर बना है 171 175 के बीच। और वहीं दूसरे पारी में जो एवरेज स्कोर हुए वो हो जाता है 145 से 150 के बीच। कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकता है कि जो भी टीम अब टॉस जीती है, जो भी कप्तान टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का उनका फैसला होता है। चेस करना आसान नहीं है इस विकेट पर। अब तक 5 मैचेस खेले गए हैं और एक भी बड़ा स्कोर चेस नहीं हुआ है। हालांकि एक मात्र चेस हमने जो देखा था वो रेजिंग बुल्स की तरफ से, जहां पर कुछ 150 या 160 रनों का ही लक्ष्य था, और वो भी आखिरी गेंद तक गई थी। मैच 12 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और
प्रतीक ने जीत दिलाई थी। आखिरी दो गेंदों में दो बड़े सिक्सर लगा के अपनी टीम को वो जीत दिलाई थी। एक यादगार लम्हा, एक यादगार पल मौका 365 2023 में टसल प्रीमियर लीग के। चलिए इस मुकाबले की तरफ अग्रसर एक ध्यान दें तो 11 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और सटन वॉरियर्स का स्कोर है 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Arjun will continue and starts off putting a dot ball. So the two batters are out in the middle for Warriors are Shreyas and Devansh. Poor delivery, way outside the tram line, miles outside the off, and the batsman lets it go. Chopped in on, floated delivery around the off stumps, was looking to fetch it and played on the onside. Thick inside edge, and the ball castles on through the stump. An early exit for Shreyas is gone back to the pavilion after scoring only 4. Himang Natkarni is the new batsman for Warriors. And what a way to get off the mark. Poor delivery. And in no time, ball goes over the ropes. Couple of bounces. Not the kind of delivery you're supposed to bowl in after getting a wicket. What a delivery. Batsman was looking to make some room for himself, go over the cover, but ended up putting himself in an unorthodox position to play that shot. Dot ball. This one didn't rise at all. Once again, batsman exposing all the three stumps was looking to cut it away through the cover or point. Luckily, he got the bat on time. This is good bowling by Arjun. Asking too many questions at the moment to batsman Hemang. After conceding a boundary,
He bowls 3 dot balls on the trot to finish off a brilliant over. End of a successful over. 12 overs gone, 119 for 3. So Dark Knight slowly and steadily pulling the things back after the onslaught from the Warriors batsman, and this is a bad delivery. A high full toss delivery, and batsman has smashed it into the cow corner region for a boundary. As soon as batsman hit it, he looks at the umpire, the strikers and umpire, with a hope that he will stretch his arm and signal it a no ball, but umpire thinks otherwise. It was a valid delivery. Nevertheless, boundary for Devansh and boundary for Warriors. 123 on the board. Quicker delivery. Way down the leg. Leg by, and that's a boundary. Fielder standing at fine leg gives a chase, but the ball is too quicker than him, wins the race. 127 on the board. 2 boundaries. 2 back-to-back boundaries for Warriors, and make it 3. They are making this over count. 3 boundary already. Devansh Singh, what an inning this is turning out to be for him and for his team. 36 already of just 21 with 6 boundaries and 1 mighty blow. This guy is looking in sublime touch at the moment. Once again, ball meets the bat, cuts it on the offside. Fielder at point, at backward point. Prashant, the left-hander, was there. He fumbles, and enough for the batsman to take one. Good delivery. Keeping it out of the reach of the batsman, was looking to steer to the third man. Doesn't get hold of it. No connection whatsoever. 132 on the board. We are into the 13th over. Sweet sound of the bat. Goes on the back foot and punch it through the cover. Fielder in the deep does the rest. 13 overs gone. 133 for 3. Warriors and their 2 batters out in the middle, especially Devansh. They are looking good, and they are looking to put another big total here at NL Complex. There is a wrist. What a batting paradise this wicket is for the batsman. All you need to do is just take your time, play out some odd deliveries. Once you settle in, you will be rewarded with some big innings. And that's what we have seen even the innings of Raging Bulls. And the story continues for the Warriors as well. Change in attack, and it's Karan Nair who has the ball in his hand. Can he change the things around for himself and for his team? Half volley delivery around 5th stump, and the batsman pushes it
on the offside to take one. Devan Singh looking in a good nick to play a big inning. Outside edge of the bat, and it goes straight in the hands of the fielder at third man. Another single taken. So this is good cricket from the Warriors. If they are not able to score big runs, if they are not able to score boundaries, they are rotating the strike, making sure that runs keep ticking. What a delivery. But this is not good from the wicket keeper. Was looking to do what MSD does behind the stump. Overthrow, and that allows the batsman to steal one. 136 on the board. 13.3 overs. What a brilliant toss to win for the Warriors captain. Outside edge. It came quickly to the wicket keeper. A dive was required from him. And that's what even the bowler can be seen suggesting him. Outside edge, and it flies into the vacant region. No slip fielder. And that's a boundary for Devansh. Boundary number 7 for him. 2 boundaries away, 2 good shot away from his maiden half century. Inside edge. No fielder at fine leg. This will run away to the fence again. He is inching closer to his half century. Devan Singh is riding on his luck at the moment. Change of a pace. Full toss delivery. Down the leg. Wide is the signal. Karan Nair is the bowler, bowling another expensive over. Not a good day for him with the ball in his hand. Bowling his second over, already considered 26. Once again cuts it away. And both the batsmen sprint for a quick one. 14 overs gone, 146 for 3. So after 3 quick wickets, Warriors, they needed some good partnership, and these 2 batters making sure they get one. Partnership of 1 of just 16 balls. The skipper will continue, and the strike is with Devansh. He's on 47 of 26. I beg your pardon, it's AJ who is into the attack. Driven it down the ground, and that's a boundary. And that's a 50 for Devansh Singh. Exceptional batting effort from Devansh right from the ball one. He looked in a good touch.
You talk about timing, you talk about finding the gaps, you talk about the footwork. This guy has ticked all the boxes. Another full toss, but this time he couldn't cash in on. Finds the fielder straight away, straight into the hands of cover fielder for no run. And that's a wicket. Bang on the money. Brilliant delivery to get rid of a set batter. 51 of just 29 balls. Strike rate of 175. But I believe he does his job. He has done more than what was asked from him. Happy camp. Saturn Warriors, and why not? Their batsmen have been top notch in this contest against Dark Knights. If it was Amit who gave them a blitzkrieg start, 40 of just 24, a handy knock by Ankit Jodi, who played an anchor role. And then comes the Devansh Singh, the destructor, who made sure the momentum that they have gained, their openers that they gave, they will continue. New batsman is out in the middle is Amir Chaudhary alongside Hemang Nadkarni, who is at the non-striker's end. You miss, I hit. Seems as he had got a license to start swinging right from the ball one. A message must have been sent with the batsman, the way he started playing. Though it was a delivery in his zone, but as we mentioned previously, this is not the kind of wicket where you can start hitting right from the ball one. You need to take your time. So that's a 2-in-2 for AJ. And he is on a hat trick. Hat-trick delivery. A run-out opportunity as well at the non-strikers, and it's all happening here at Mauka 365 Tussle Premier League. End of an excellent over. I beg your pardon, it's not an end. It's still one delivery to be bowled in this over. 151 on the board. And he loses his rudder. Not the first time in this inning. The one area where Dark Knights has a lot to do is the extras that they have conceded. They have conceded 24 extras so far in this inning. Outside edge, and it is flies over the third man. Hemang will collect a boundary of the last ball of the inning. Oh, beg your pardon. Last ball of AJ's over.
where he was able to get two good wickets. 156 on the board for loss of 5 wicket after 15 overs. Hundred and 57. छोर बदलता हुआ और गेंदबाजी के लिए जारी और रेडी करण नायर। 156 हो चुके हैं स्कोर 15 ओवर के बाद। अब आखिरी 5 ओवर बाकी। बढ़िया गेंद, बैकफुट पे जाके इसे पंच करना चाहते थे, लेकिन गेंद में वो उछाल नहीं जिस उछाल की बल्लेबाज ने अपेक्षा की थी। अनदर विकेट। जी हाँ, एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद को सीमा रेखा के बाहर खेलने का प्रयास। फिर वही कहानी, यू मिस आई हिट। तो रन तो बेहतरीन बने हैं, अच्छे रन्स बने हैं, लेकिन लगातार अंतराल में अब विकेट गिरना शुरू हो चुके हैं। छठा विकेट प्राप्त करते हुआ वॉरियर्स और करण नायर के खाते में पहला विकेट। एक और शानदार गेंद, बाल बाल बचे बल्लेबाज। हल्की सी गेंद में उछाल, अगर वो उछाल नहीं होती तो गेंद सीधे स्टंप पर जाकर टकराती। क्या कमबैक रहा है डार्क नाइट्स के गेंदबाजों द्वारा। जब भी विकेट्स प्राप्त किए हैं, गुच्छों में विकेट्स प्राप्त किए हैं, ये एक कारण है कि अब वॉरियर्स के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में नाकामयाब रहे हैं। कॉट, माफ कीजिए, एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा। कहीं ना कहीं उनके बॉडी लैंग्वेज से प्रतीत होता है कि गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में जब वो आते हैं तो स्टंप्स के सामने आ जाते हैं। नतीजा ये कि अंपायर उस पोजीशन में नहीं थे कि उस एलबीडब्ल्यू को स्वीकार कर सके। चहलकदमी करते हुए अनसेटल करने का प्रयास गेंदबाज को, और कामयाब। एक तमाचा सा लगाया था इस शॉट को।
राइट आर्म अराउंड द विकेट, घुटने पे जाकर इसे स्वीप करना चाहते थे, खेलना चाहते थे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीधे उनके स्टंप, उनके पैरों पर जाकर टकराई। डॉट गेंद के साथ एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 160 रन 16 ओवर के बाद। फुल टॉस की गेंद, इसे कट कर दिया है थर्ड मैन के खिलाड़ी। ये का एक ही रन होना चाहिए था। उतना मुश्किल कार्य नहीं था जितना मुश्किल नजर आया थर्ड मैन के लिए। मात्र एक रन होने चाहिए थे, लेकिन 4 रन दे दिया है वॉरियर्स को। 164 रन हो चुका है उनका स्कोर। बढ़िया गेंदबाजी अजय द्वारा, माफ कीजिए एजे द्वारा। फुलर लेंथ की गेंद, लेकिन इस दफा गेंद ने बिल्कुल भी उछाल नहीं प्राप्त किया। अच्छे गेंद भी अब बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं। या इसीलिए कहा जाता है ये जो क्रिकेट है ना, बल्लेबाजों के पक्ष में ज्यादा है। इट्स अ बैट्समैन क्रिकेट, इट्स बैट्समैन स्पोर्ट। गेंदबाजों के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं कह सकते। इतनी बढ़िया गेंद, लेकिन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया बल्लेबाजी भी। एजे की क्या बात करें, इनका एक्शन याद दिलाता है साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज खिलाड़ी थे, मखाया एंटनी, जो कुछ इस प्रकार अपनी जब गेंदबाजी का इनका जो एक्शन है, दोनों हाथ ऊपर रखते हैं और जो रिलीज होता है तो पहला बायां हाथ आता है, उसके बाद जो पावर जनरेट करते हैं ये हाथ की घुमाव से, अपने कंधे से, वो देखने ही बनता है। बढ़िया संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, वहां पर कप्तान तैनात काउ कॉर्नर के रीजन पे। मात्र 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। अब तक बढ़िया ओवर घटा है ये वॉरियर्स के लिए, 10 रन आए हैं इस ओवर में अब तक, 2 गेंदें बाकी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कुछ अच्छी गेंद जरूर फेंकी गई है डार्क नाइट्स के गेंदबाजों द्वारा, लेकिन कंसिस्टेंसी जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखी है। और यही एक नतीजा है कि वॉरियर्स का स्कोर अब 17 ओवर के बाद हो चुके हैं, 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हेलो, 18 ओवर लेकर आए हैं गोविंदराज, और अपने स्पेल का आखिरी ओवर, 3 ओवर में 29 रन खर्च किए हैं अब तक।
एक सफलता प्राप्त हुई है उन्हें। और क्या शॉट लगाया है प्रशांत के बल्ले से, बहुत ही बढ़िया शॉट। काफी दूर सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी ये गेंद, और इस 6 रन के साथ स्कोर हो चुका है 176 रन। एक बार फिर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में ये गेंद गई डार्क नाइट्स के सबसे बढ़िया खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद, लेकिन उनसे भी ये गेंद नहीं रोकी गई। जॉन्टी बुलाया जाता है उन्हें। हल्के से फंबल हुए और 2 रन। ये बढ़िया गेंद है, फ्लैटर डिलीवरी। फ्लाइट बिल्कुल भी नहीं देना है, जैसे ही फ्लाइट देखते हैं उस गेंद को भेज देते हैं आसमान की तरफ। ये बढ़िया गेंदबाजी गोविंदराज द्वारा, अपने गलती से सीखते हुए। और हर एक खिलाड़ी की अच्छी निशानी यही होती, गलती तो हर कोई करता है, लेकिन आप जितनी जल्दी अपने गलती से सीख लें वो आपको बढ़िया खिलाड़ी बनाता है। लेकिन ये क्या, उस पहली गेंद की गलती के बाद बढ़िया वापसी किए थे, एक बार फिर फुल टॉस की गेंद खराब गेंद थी। प्रशांत नाखुश जरूर होंगे अपने आप से। फुल टॉस की ये गेंद लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में। एक एक्रोबेटिक फील्डिंग की जरूरत थी। अगर ये कैच होता तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जरूर होता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित क्रीज पर। हालांकि 1 रन दौड़ने के बाद वो छोर बदल लिए हैं, अब वो नॉन स्ट्राइक पर नजर आएंगे। अब स्ट्राइक पर हैं हेमंग नाटकर्णी, जो कि 142 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में महज 20 रन बना चुके हैं, 4 बाउंड्रीज के मदद से। खराब गेंद, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। जी हाँ, स्पिनर द्वारा अगर नो बॉल फेंकी जा रही है तो ये बहुत ही रेयर साइट है। बतौर स्पिनर उम्मीद भी नहीं किया जा सकता आपसे कि आप कंट्रोल में ना हो। अगर आप कंट्रोल में नहीं हैं तो आपको वो गेंद फेंकनी ही नहीं चाहिए, यही सिखाया जाता है। और ये फ्री हिट की डिलीवरी को बहुत ही रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वो जो थर्ड मैन और पॉइंट का फील्डर है, उन दोनों के बीच से गैप ढूंढने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा। लाइसेंस मिला था लेकिन चीकी शॉट खेलने के प्रयास में फ्री हिट का मौका गंवाया। 18 ओवर की समाप्ति। वॉरियर्स का स्कोर है 180 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत की है 19वें ओवर की। प्रशांत एक पावर हीटर हैं वॉरियर्स के बल्लेबाजी क्रम में।
गेंद उनके पाले में, और क्या लंबा शॉट, क्या बढ़िया संपर्क, देखने ही बनता है। शॉट को आप बार बार अगर रिपीट करके भी देखेंगे फिर भी ना थकेंगे। कुछ इस प्रकार का वो शॉट था। और जो भी लोग, जो भी खिलाड़ी प्रेमी, खेल प्रेमी माफ कीजिए, इस खूबसूरत से मैदान में इस मुकाबले को लाइव देख रहा है, वो जो गेंद और बल्ले का संपर्क होने के बाद जो आवाज आई ना, वो आपको खुश कर देगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देगा। कुछ उस प्रकार का संपर्क था। ये लीजिए, अब तक का सबसे दूर जाता हुआ ये मैक्सिमम। बहुत ही ताकत है इनके कलाइयों में, इनके भुजाओं में। अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज प्रशांत। तो लगातार मैक्सिमम के बाद ये बाउंड्री। तो ताकत तो है ही इनके कलाइयों में, इनकी भुजाओं में, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज को प्लेसमेंट, वो गैप ढूंढने का जो कला होता है वो भी इनके अंदर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 गेंदों में 30 रन। एक बार फिर बैकफुट पे जाकर करारा प्रहार, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में। What a brilliant cameo this is turning out to be from Prashant. 30 of just 14 balls. Another slot delivery to the right hander. Mix up in the middle. And one cannot believe their eyes. Both the batsmen are home safely. One of them had to sacrifice the wicket. And eventually it was Hemang who had given up. But Dark Knights, they fumbled big time. Excellent comeback by Prashant Nikam. After being hammered for 16 runs off just 3 balls, he came back strongly to concede only one after that. 17 in that over takes the tally to 196. Beg your pardon, it should be a 197. We're still waiting for the score to be updated. So it's 197 for 6 after 19. Good thing for Warriors that the strike is with the danger man Prashant. And to finish off this inning, Captain Arjun has given the responsibility to Karan Nair. Will he be able to stop this onslaught, to stop this rampage by this hard-hitting batter? Right arm around the wicket, inside edge, and that's a boundary. Fine leg fielder. What have you done here? Should have been stopped with hand, but he was looking to stop with his foot. Sloppy.
And that's a 200 up for Warriors. 201 for 6. This is good delivery into the block hole. He played it firmly, but fielder at cow corner stops it, and they don't want to take single. And one can understand the decision behind that. Excellent delivery by Karan, holding his nerves big time. Bowling off the final over, especially when both the batsmen from the opponent are going hard at you. It takes some skill. He is doing brilliantly. He has been exceptional so far. Karan Nair. He didn't start off on a good note in his initial spells. But what a last over. This is turning out to be only 4 runs conceded. That too came off the inside edge. What a shot. No stopping that. Slapped it through the cover. Fielder at sweeper cover was standing mere spectator. Last ball of this inning, Saturn Warriors. 205 for 6. Prashant playing on an individual score of 39 of just 21 balls, courtesy 4 boundaries and 3 mighty blows. Can he send this out of the park? Last ball coming up. Excellent delivery, and this will raise the way to the fans or not. Seems like a fielder. Oh, yes, it is confirmed by the umpire. Another inside edge. This is so harsh on the bowler. But nevertheless, it's a boundary for Warriors of the last ball of the inning. And that will take the score to 209. Yeah, you heard me right. It's 209 for 6. What a partnership this was between Prashant and Hemang. Boundary of the last ball of the inning. And that's a partnership of 53 of just 29 balls. 210, 200 is the target for Dark Knights. And it will require some brilliant batting effort to chase this down. It will not be an easy thing. I'm telling you this. We'll be right with the chase in shortly.
तो 210 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतर चुके हैं डार्क नाइट्स के सलामी बल्लेबाज राकेश और जॉन्टी। और स्कोर हो चुके हैं 8 रन और ये लगा पहला झटका। गेंद बल्लेबाज के पाले में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे मिड ऑन के खिलाड़ी के हाथ में। मिस टाइम कर दिया था ये शॉट। हालांकि ये विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज के को लौट कर जाना होगा पवेलियन। और मंजुनाथ गेंदबाज, उनके खाते में पहला विकेट। और जब आप 210 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे हो तो आपको बल्ला चलाना ही होता है। आप एक तो बाउंड्री मारने के बाद चैन की सांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हालांकि कुछ ही बल्लेबाज जो होते हैं एक कैलकुलेटिव इनिंग खेल पाते हैं। लेकिन कुछ बल्लेबाजों की एक शैली होती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। राकेश चौहान उसी शैली के बल्लेबाज। जब तक क्रीज पर रहते हैं बल्ला चलाते रहते हैं, और जब तक इनका बल्ला चलता रहता है विपक्षी टीम परेशान दिखते हैं, परेशान नजर आते हैं। लेकिन उनके विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन, जो जश्न मनाया, वो बहुत कुछ बयां करती है, वैल्यू बताता है उस विकेट की। नए बल्लेबाज हैं केडी, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। एक ऐसा पोजीशन जो कि टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को दिया जाता है। और आते ही बैकफुट पे जाके इसे कट कर दिया है। थर्डमैन के खिलाड़ी से हल्की सी मिडफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने अच्छा तालमेल दिखाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने आपसों में, एक खिलाड़ी की गलती दूसरे खिलाड़ी ने पूरी की। मात्र एक रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर है 9 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की शुरुआत हो गई है और गेंदबाज हैं प्रशांत। शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, एक आतिशबाजी हुई थी उनके बल्ले से। गेंदबाजी का भार संभाला है, लेकिन पहली ही गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत ही बाहर ऑफ स्टंप के। इतनी बाहर की विकेट कीपर भी इस गेंद को रोकने में असक्षम। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, 5 अतिरिक्त रन जुड़ जाएंगे डार्क नाइट्स के टीम टीम के खाते में। बढ़िया गेंद, सीधे स्टंप्स पे अटैक करते हुए, और इसे कवर ड्राइव खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में। रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं, कोई मौका नहीं। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। स्लाइस करना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन उनके रीच से बहुत ही बाहर, वाइड का इशारा। ऑलमोस्ट उसी टप्पे पर गेंद फेंकी गई थी जिस टप्पे पे पिछली गेंद फेंकी गई थी। और टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की ओर जाती हुई, इतने बाहर की अंपायर को अपनी बाहें फैलानी पड़ी। एक कारण ये होता है गेंदबाजों द्वारा, जब वो काफी अतिरिक्त रन्स दे रहे हो एक्स्ट्रास के रूप में, वार्म अप की कमी नजर आती है गेंदबाजों के द्वारा। कहीं ना कहीं
प्रशांत की गेंदबाजी में भी वही नजर आता हुआ। पूरे लय में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ अभी तक पूरा खुला नहीं हुआ, फॉलो थ्रू भी कंप्लीट नहीं करते हैं। और जब आप नए गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जहन में रखनी चाहिए। बाहरी किनारा बल्ले का एक और खराब क्षेत्र रक्षण थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। 4 रन जुड़ जाएंगे एक बार फिर डार्क नाइट्स के खाते में। ये बढ़िया गेंद। इस गेंद की अगर बात करें तो इस गेंद में गति भी थी और लेंथ भी बेहतरीन था। और ये आप देखेंगे कि जितनी गेंदबाजी करेंगे प्रशांत, वो बेहतर ही होते जाएंगे। तो ये जो इंटरवल बिटवीन द इनिंग्स होता है एक पारी खत्म होने के बाद, ये आपके पास 10 मिनट का समय होता है। उस समय में चलो हडल तो है ही, आपको हडल के बीच में कप्तान जो भी कहते हैं वो सुनना होता है, आपके कोच जो भी कहते हैं वो सुनना होता है, एक इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको। लेकिन उन्हीं बीच गेंदबाजों को उस समय का इस्तेमाल करना चाहिए, एक वार्म अप सेशन जो होता है उनके लिए उसमें शामिल होना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए और जितना हो सके कम से कम 5-6 गेंदे फेंकनी चाहिए। हाथ खोलने चाहिए, कंधे मजबूत होते हैं और उससे आपको एक रिदम प्राप्त होता है जो कि आपको मैचेस के दौरान बढ़िया गेंदबाजी करने में सक्षम बनाता है। लेकिन फिलहाल एक संघर्ष कर रहे हैं प्रशांत अपनी गेंदबाजी को लेकर। ना ही उनका गेंदबाजी का रिदम उतना उतने अच्छे लय में ना नजर आए हैं, ना ही उनके लाइन और लेंथ एक टप्पे पट्टी की है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं। और लगातार एक्स्ट्रास रन कंसीड कर रहे हैं। और एक ऐसा समय आता है जहां पर मुझे लगता है कि कप्तान को खुद जाना चाहिए और गेंदबाज से बात करना चाहिए, ये क्या अपना रन भी शॉर्ट कर लिया और मीडियम पेसर से ऑफ स्पिनर बन गए। और ये लीजिए, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि विकेट मिल चुकी है। बहुत ही तेज अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन बिल्स नीचे नजर आ रहे हैं। तो बोल्ड आउट होकर बल्लेबाज पवेलियन लौटते हुए। बल्लेबाज को यकीन नहीं होता जो भी हुआ उनके साथ अभी। आशुतोष नए बल्लेबाज और जॉन्टी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। एक अच्छे बल्लेबाज जरूर थे, लेकिन आज जब वो जरूरत थी उनके टीम को उनकी, आज उनका बल्ला ना चला। सस्ते मेरे पवेलियन लौटते हुए। एक बड़ा ओवर अभी भी जारी, लेकिन खुश होंगे वॉरियर्स के कप्तान की। अंत ही सही एक विकेट जरूर प्राप्त हुआ इस ओवर में, बतौर ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करते हुए। डाउन द लेग एक और वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन। दूसरा ओवर जारी है और स्कोर हो चुका है 28 रन। 19 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। फ्लाइटेड डिलीवरी आउटसाइड एज, बाहरी किनारा ड्राइव करना चाहते थे, टाइमिंग ठीक नहीं। बाहरी किनारा लग कर गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन लेने का मौका, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर है डार्क नाइट्स का 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मंजुनाथ गेंदबाजी पर
गेंदबाजी का भार संभाले हैं तीसरा ओवर, व्यक्तिगत दूसरा ओवर। ऊंचे काठी के तगड़े गेंदबाज हैं ये, बढ़िया कंधों का इस्तेमाल, बढ़िया गति है इनके पास। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया लय में नजर आते हैं, एक एफर्टलेस एक्शन है इनका। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं ये गति प्राप्त करने के लिए, नेचुरल आता है इन्हें। ब्रिलियंट डिलीवरी। जी हाँ, जिस प्रकार का इनका एक्शन, इनका फॉलो थ्रू, हालांकि ये कंपैरिजन नहीं, लेकिन जब मैं एफर्टलेस की बात करता हूं तो एक ऐसा एफर्टलेस गेंदबाज मेरे जहन में आता है, वो है जोफ्रा आर्चर। जी हाँ, बिल्कुल भी एफर्ट लगाते नहीं है, लेकिन जो गति प्राप्त करते हैं वो चौंका देने वाली। शानदार गेंदबाजी। जी हाँ, तापमान तो बढ़ ही रहा है, गर्मी बढ़ी रही है, लेकिन इस प्रकार की जब गेंदबाजी होती है ना, तो बल्लेबाज के लिए गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, पसीने छूटने लगते हैं। और पसीने छुड़ाते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाज को, इस गेंद को ही देखिए। दोहरे विचार में थे, पहले सोचे छोड़ दूं, आखिरी समय पर गेंद बल्ले से टकराई और भाग्यशाली रहे कि गेंद थर्डमैन की दिशा में गई। गेंद कभी कभी ऐसा होता है कि गेंद टॉप एज लग के किसी भी खिलाड़ी के हाथ में चली जा सकती थी। इस बार कंधे का इस्तेमाल किया था, डेक को हिट किया था, कंधे का इस्तेमाल करके अतिरिक्त उछाल प्राप्त करने का प्रयास था गेंदबाज द्वारा, लेकिन विकेट में वो उछाल नहीं। विकेट में उछाल है, लेकिन किसी किसी लेंथ पर है, वो दोहरा उछाल जिसे हम कहते हैं ना, अनइवन बाउंस है इस विकेट पर, लेकिन वो लेंथ आपको ढूंढना होगा। हर एक लेंथ पे से आप गेंद को नहीं उछाल पाते, कुछ इस प्रकार का ये विकेट है। तो एक और किफायती ओवर, एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति मंजूनाथ द्वारा। 3 ओवर के बाद अब स्कोर है डार्क नाइट्स का 31 रन, 31, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रत्यय है गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज रहे हैं ये, सेटन वॉरियर्स की तरफ से एक लीडिंग विकेट टेकर हैं ये अपने टीम की तरफ से। 7 नंबर के जर्सी के गेंदबाज, और शुरुआत की है इन्होंने डाउन द लेग चैनल से, वाइड से। और गेंद अंदर आते हुए अंपायर की उंगलियां आसमान में। LBW, केडी आउट होने वाले बल्लेबाज, और प्रत्यय अपने पहले ही ओवर में विकेट प्राप्त करते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए। जी, हम जिक्र ही कर रहे थे कि ये एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और स्ट्राइक किया है अपने टीम के लिए एक बार फिर। चौथा ओवर गतिमान, और डार्क नाइट्स के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटकर वापस। और गेंद की अगर बात करें तो गेंद में भी उतना शाइन नहीं, उतना पैनापन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एक्शन, जो उनका एक नेचुरल एक्शन है, राइट हैंडर बैट्समैन के लिए गेंद पड़कर अंदर की तरफ आती है, और यही एक कारण था कि उस गेंद को पढ़ नहीं पाए। नए बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज रथीन। इनका दिन गेंद से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, अब चाहेंगे कि बल्ले से अपना दमखम दिखाएं, अपना
टैलेंट दिखाएं। पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को छोड़ती हुई डॉट गेंद। एक बार फिर गेंद पैरों पर जाकर टकराई, लेकिन इस बार यकीनन गेंद का जो पिचिंग था वो ऑलरेडी लेग साइड के बाहर। अंपायर ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया उस अपील में, और ना ही गेंदबाज या विकेट कीपर ने अपना एनर्जी गंवाया अपील में। बड़ा शॉट, वन बाउंस ओवर द फेंस। बढ़िया शॉट यहां पर बल्लेबाज रथिन द्वारा। जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज है, याद दिलाते हैं न्यूजीलैंड के जेसी राइडर की। अपना फ्रंट लेग क्लियर करके मिड विकेट के वेकेंट रीजन में खेल दिया ये बेहतरीन शॉट, और 4 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए। और ये रहा जवाब गेंदबाज द्वारा। शानदार कमबैक प्रत्यय द्वारा। सीधे ब्लॉक होल में बाल बाल बचे रथीन। बहुत ही बढ़िया लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। आसान नहीं है बल्लेबाज को उस लेंथ पर से शॉट खेलना। पर फिर गुड लेंथ पर गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज ने कट करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं गेंद और बल्ले का। डॉट गेंद, 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और कप्तान ने एक बार फिर भरोसा जताया है गेंदबाज प्रशांत पर, लेकिन प्रशांत नॉट एज अ मीडियम पेसर, एज अ ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म अराउंड द स्टिक्स, स्टार्ट्स ऑफ बॉलिंग डाउन द लेग, वाइड इज द सिग्नल। Another full toss delivery, good use of the wrist. Played it on the onside, down the ground, but the fielder at mid wicket restricted the batsman only for one easy single. Left hand, right hand combination out in the middle for Dark Knights, and they would be hoping that these two batters stay at the crease till the long, long time and stitch a good partnership, add a good strike rate. That's what is this is what is required at the moment for Dark Knights. But at the moment, Prashant, he's struggling with his line and length. Not an easy task for the bowler to bowl to right hand, left hand batsman. What a shot from Ashutosh. Only 3 fielder are positioned on the onside, one at third man, I beg your pardon, fine leg, mid on, and mid wicket. Big gap between mid on and mid wicket, and Ashutosh, with a brilliant use of the wrist, gets a boundary. I don't think it's a good idea to bowl to a right hander, especially if bowling around the sticks. It's not easy to have a control over the ball for the right arm off spin bowler. Lucky, very fortunate. The bowler is. It was bowled onto the pads. Batsman swept, but he finds the fielder at fine leg. No run taken. Floated delivery. This time gives a little bit of air to the ball. Batsman was looking to drive it through the cover. Inside edge. No damage done.
44 on the board. Another delivery on the pads, and once again, batsman using his wrist to play it down the ground for a single, and that's an over number 5, 45 on the board for loss of 3 wickets. Big total to chase down here at Mauka 365 Tussle Premier League 2023. Day 3, match number 6, which is being played between Dark Knights versus Saturn Warriors, where Warriors captain won the toss and with no hesitation, he decided to bat first. And courtesy their batsman, they posted a big total of 209. In reply, Dark Knights at the moment 5.1 overs gone, score is 45 for 3, and the required run is 165 of 89 balls. Slowly and slowly, the required rate, it's climbing up. Pratyay is the bowler once again asking questions to the batsman Ashutosh at the moment. So he has a knack of getting the balls in to the right hander, also known for his cutters. And once again, a half volley delivery, which could have been driven through the offside, but because he rolls his finger over the ball to bowl those cutters, takes the inside edge of the ball bat and goes on the onside, takes a single. Right arm over the wicket to the left hander. This is excellent bowling by a very good bowler, Pratyay. Ball pitches on the leg stump. Excellent delivery. He is looking in a great control. Let me tell you, it's not an easy delivery to bowl. The line that he is bowling, sometime it just straightens a bit, and which can be put away on the onside for 4 or a maximum. But this time, he misses by an inch, and that's enough for the batsman to clear the fence with ease. Once again, clears his front leg, and the ball goes downtown. What a brilliant collection from Rathin. Six overs gone, 53 on the board for loss of 3 wickets.
Prashant will continue, and Ashutosh will continue to score runs off his bowling. This is good cricket from both the batsmen now. And this is what happens when you spend some quality time at the crease. You start scoring off runs easily. Such a kind of track is this. He's so good with his wrist. One has to admit. Anything on his pads or anything on the middle is not missing out on the opportunity to score runs. Good delivery, quicker delivery. And he was looking to steal one. Would have been a touch and go. Rightly sent back by the batsman Ashutosh, who is at the non-striker's end. You don't want to lose your wicket, especially in form of run out. It's a crime to do so at this juncture of the contest. This partnership has just started to look dangerous at the moment. And they would like to continue. They would like to bat till the very end. One of the batsmen has to take the onus, has to take the responsibility to bat till the end and take their team home. Two dot balls, and as soon as he sees the room, frees his arm, slashes hard, and it goes over the point and third man. And this lightning quick outfield does the rest. It takes the ball over the ropes for a boundary. Rathin, a hard-hitting batsman, looking good at the moment. Once again, this one a bit quicker than all the deliveries that he has bowled in this over. Probably the quickest one in this over, and batsman misses it completely. 7 overs gone, and the score is 62 for loss of 3 wickets. Pratyay bowling the 8th over, starts off conceding an extra down the leg. This time slower one in the air, two fielders trying to get underneath it, and ball falls into the no man's land, and that's a wicket in form of run out. This is a big wicket. Rathin, the destructive left-hander, he will have to go back to the pavilion. This is not a good sight to see, especially for the Dark Knights. Just when these two batters started to look good, one of them has to go back to the hut. Crazy scene, and the Warriors, they are ecstatic, and why not? An opportunity for the fielder to catch it. He spills it, but eventually he manages to get the batsman sort of his crease.
And the new batsman walks in is Abbas Khan, the hero of the match in the previous contest where Dark Knights were up against Black Knights. And this guy was the difference between those two teams. Can he replicate the things what he did in the previous contest? Can he take his team out of this trouble? A good delivery. They are appealing. They believe that batsmen have nicked it. But the umpire, Amit, he has been spot on. It clearly came off the pads, not from the bat. So good umpiring this by both the match officials. Good delivery and equally well played by the right hander, though it was a bit uppish. Single taken and strike given back for the first time in this inning to Abbas. Another delivery with jacks back to the right hander. He picked the length very early, closes the bat, face of the bat, and was looking to nudge it on the onside. But the fielder at square leg is positioned for those shots. This was a slot delivery for the batsman who is in form, and he's not gonna waste any time. Needed no second invitation, though it didn't come from the meat of the bat, but enough power behind that shot to take the ball over the ropes for a boundary. And that's how Abbas is off the mark in some style here. Straight down the ground, over the bowler's head, and a fielder at long off. He was a bit clumsy there in the deep, and that's two back-to-back boundaries for Abbas, and that's with the help of boundary. The score moves up to 73 for 4 after an end of 8 overs. Play and a miss, squared him up completely. Shapes away from the right hander. Shaker is the bowler. That's dead plumb. The batsman would be livid with himself. A full toss delivery, which should have been put away,
struck his pad in no time. Umpire has raised his finger up. 2 quick wickets and half a side of Dark Knights are back to the hut. So after 2 quick wickets, the captain is out in the middle. Arjun Srivastava. Now the owners on these two batters. Both the batsmen have the ability to take the game away from the opponents, and not the first time they will be doing so if they are able to do. In the air and falls just short of the fielder at point. Excellent backup from the fielder at long off. This is good cricket. Lucky escape this for the straight away. Eighty for 5. Dark Knights, Abbas and Arjun. A factor at the moment. At Shaker bowling his first over, and in his very first over gets a wicket, but also conceded 9 runs, make it 13. Poor line to bowl to the batsman likes of Abbas, and he has just guided it, held the ball on its way to the boundary. So Dark Knights have scored 86 for 5 after 9 overs. They have scored on a very good run rate. It's just that they have lost a couple of more wickets than they would have hoped for. $124 required in 11 overs. Still
pretty much gettable as long as these two batsmen are out in the middle. For Dark Knights, this score is certainly an achievable. हाँ सरताज हेलो आदित्य मंजुनाथ हैं गेंदबाज और इनके खिलाफ बड़े शॉट खेलना आसान नहीं होगा। आपको एक क्वालिटी बैटिंग की जरूरत है एक क्वालिटी गेंदबाज के विरुद्ध। ये देखिए गति और उछाल दोनों ही प्राप्त कर रहे हैं। तेजी से बल्ला घुमा तो रहे हैं लेकिन जितनी तेजी से बल्ला घूम रहा है उससे काफी तेज गेंद निकल रही है मंजुनाथ के हाथों से। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल टाइमिंग नहीं। इस बार गेंद उनके पाले में लेकिन पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि शॉर्ट आर्म जैब खेलने में जरूर कामयाब रहे। खिलाड़ी डीप में तैनात मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में गेंद। एक रन लेने का पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास। ये लीजिए दोनों ही बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं अर्जुन और अब्बास। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज के पास जवाब नहीं है मंजूनाथ की गेंदबाजी का। कुछ इस प्रकार का गेंदबाज है ये। अपने 3 ओवर में महज खर्च किए 8 रन 1 विकेट प्राप्त किए। जिस प्रकार की ये गेंदबाजी किए हैं विकेट कॉलम में नंबर बढ़ने चाहिए थे। लेकिन कहते हैं ना ये दिन का खेल है साहब। आपका बल्ला चले तो ताली आपका गेंद भी आपको विकेट दिलाए तो ताली। लेकिन सलाम करते हैं इस प्रकार की गेंदबाजी का बहुत ही कम देखने मिलता है T20 के फॉर्मेट में कि कोई गेंदबाज गेंदबाजी करने आए और उसका इकोनॉमी रेट जो हो वो 3 और 4 के बीच में हो। तो 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। डार्क नाइट्स का स्कोर है 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर और समय हो चुका है ड्रिंक्स ब्रेक का।
गेंदबाजी में बदलाव और अब कप्तान ने बुलाया है हेमंग नाटकर्णी को गेंदबाजी करने के लिए। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है डार्क नाइट्स की। और पहली गेंद में उनका स्वागत किया है बल्लेबाज अर्जुन ने। एक बेहतरीन शॉट लगाया था लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफी वाइडिश तैनात अपने बाएं तरफ तेजी से दौड़कर गेंद को रोका और बल्लेबाज को भी रोका एक रन के लिए। एक रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 88 रन। अब 10 माफ कीजिए 59 गेंदों में चाहिए 122 रन। रिक्वायर्ड रेट अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12.41 का रिक्वायर्ड रेट। इसे इम्प्रोवाइज करके खेलना चाहते थे। फाइन लेग के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था लेकिन जिस अनइवन बाउंस की हम बात कर रहे थे वो देखने मिला। गेंद बिल्कुल भी उठी ही नहीं सतह से। बल्ले का बॉटम एज और बाल बाल बचे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक नहीं लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये गेंद उनके हाथ में है। जहां जिस प्रकार आम तोड़ते हैं ना पेड़ पे से कुछ उसी प्रकार से इन्होंने कैच लपक के लिया है। एक समय को ऐसा लगा कि गेंद उनके ऊपर से निकल जाएगी लेकिन अंत समय में उन्होंने गेंद हवा में अपना हाथ हवा में रखा और अगले ही समय में देखे कि गेंद उनके हाथों में चिपकी हुई है। अब्बास आउट होने वाले बल्लेबाज और इनका बल्ला शांत रहा। हालांकि मात्र 7 गेंदों का सामना किए 12 रन बनाए। इनका चलना आज जरूरी था डार्क नाइट्स के लिए लेकिन एक बहुत ही बड़ा विकेट हेमंग नाटकर्णी को प्राप्त होता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं एजे और पहली गेंद पुश कर दिया है ऑफ साइड में। इरादा बिल्कुल भी नहीं था रन लेने का लेकिन जैसे ही देखा गेंद के इर्द गिर्द कोई भी खिलाड़ी नहीं है अपने कप्तान की तरफ देखा नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर और दोनों ने ही आंखों में इशारे करते हुए एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। पैरों पे जाकर ये गेंद टकराई। नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। क्या संपर्क रहा है गेंद और बल्ले का। सीधे साइड स्क्रीन पर गेंद टकराई। अर्जुन श्रीवास्तव के बल्ले से निकला ये पहला मैक्सिमम। 11 ओवर की समाप्ति 95 रन 6 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिए एक
हल्की सी मिस कम्युनिकेशन यहाँ पर, तकनीकी ग्लिच के वजह से। ओवर की समाप्ति अभी नहीं हुई है, अभी भी एक गेंद शेष थी, वाइड गेंद हो गई थी, गेंद हवा में। कप्तान अंपायर से सवाल करते हुए, उनका मानना है कि गेंद उनके वेस्ट साइड के ऊपर थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गेंद हल्की सी डीप हो रही थी और थोड़े से लेट हो चुके थे उस शॉट को खेलने के लिए। टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं और एक आसान सा मौका। सातवें विकेट का पतन, 11 ओवर की समाप्ति, 96 रन। मंजुनाथ चले अपना आखिरी ओवर लेकर, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे कट कर दिया है, कोई भी मौका भी नहीं किसी भी खिलाड़ी के वो गेंद रोकने का। काफी देखने मिलता है इस प्रकार का शॉट, बल्लेबाज अब इंतजार करने लगे हैं। जी हाँ, अब के जनरेशन में कुछ ऐसा ही होता है। गेंद हवा में, देवांश लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद पर झपटे, एक ही रन लेने का मौका। तो जी हम आजकल के बल्लेबाजों की हम बात कर रहे थे, इस नए पीढ़ी, इस नए जनरेशन के बल्लेबाज बैकफुट पे ज्यादा नजर आते हैं शॉट खेलने के लिए, जो क्रीज है, क्रीज की गहराई में को इस्तेमाल करते हैं। और यही एक कारण है कि उन्हें बहुत समय भी मिलता है। कई बार हमने देखा है कि गुड लेंथ की डिलीवरी कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट लेंथ डिलीवरी में, क्योंकि बल्लेबाज क्रीज के अंदर खड़े हैं और उसके कारण वो पुल शॉट या हुक हो या कट हो, खेलने का समय बहुत ज्यादा मिल जाता है उन्हें। पर फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और ये लीजिए, अगर आप सोच रहे थे कि वो कैच लॉन्ग ऑफ पे जो वन हैंडेड पकड़ा था 8 नंबर की जर्सी ने, वो बेहतरीन कैच थी इस पारी की, तो साहब आप ये कैच देख लीजिए। क्या शानदार कैच पकड़ा है, गेंद ना डीप हो रही थी, लेकिन फॉरवर्ड की तरफ, अपने आगे की तरफ डाइव करते हुए अंत समय तक अपनी नजरें बनाए रखी थी गेंद पर, और कुछ इंच रहते ही ग्राउंड के पहले ही गेंद उनके हाथों के नीचे और कैच को कंप्लीट कर लिया। शानदार कैच हेमंग नाडकर्णी द्वारा, और मंजुनाथ को मिली दूसरी सफलता। मच डिजर्विंग विकेट, मैं कहूंगा काफी समय से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हो। जब आप इतनी बढ़िया गेंदबाजी करें और आपके विकेट कॉलम में मात्र 1 या 2 नंबर हो, तो गेंदबाज खुश नहीं होते हैं। लेकिन ये विकेट के बाद, हालांकि ये विकेट फील्डर को जानी चाहिए, लेकिन विकेट कॉलम में जुड़ जाएंगे गेंदबाज के, और ये विकेट होनी चाहिए। जी नहीं, अंपायर नहीं मानते हैं, उनका मानना है कि गेंद डाउन द लेग जा रही थी। जैसे हम कहते हैं ना, नेकेड आई, जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी खिलाड़ी का, उस नेकेड आई से ऐसा जरूर लगा कि बल्लेबाज विकेटों के बीचों बीच खड़े हैं।
लेकिन एक बार फिर दाद देनी होगी अंपायर की। रिप्ले पे देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि निर्णय अंपायर द्वारा बेहतरीन शानदार निर्णय। 12 ओवर की समाप्ति और अब डार्क नाइट्स का स्कोर हो चुका है 103 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का खेल खेला जाना बाकी, और अब वॉरियर्स कहीं ना कहीं इस पारी को समेटने की फिराक में जल्द से जल्द झटकने होंगे। उन्हें 2 विकेट एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं सैटर्न वॉरियर्स। और ये यकीनन नो बॉल होगी। कुछ अतिरिक्त एक्सपेरिमेंट की तलाश। बैक ऑफ हैंड से ये स्लोअर वन फेंकने के प्रयास में गेंद वेस्ट साइड के काफी ऊपर। नो बॉल का इशारा। 2+1, 3 रन जुड़ जाएंगे। और ये है फ्री हिट डिलीवरी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन प्रशांत के लिए। और ये लीजिए फ्री हिट का बढ़िया इस्तेमाल। एक बार फिर गति में परिवर्तन किया था, लेकिन गेंद उनके पाले में स्लॉट डिलीवरी और काउ कॉर्नर के रीजन में ये लगा बेहतरीन मैक्सिमम। स्कोर हो चुका है निल्सन 1-1-1 फॉर 8। ये बढ़िया वापसी गेंदबाज द्वारा। लेंथ में परिवर्तन किया, लाइन में परिवर्तन किया। इस बार फुलर लेंथ की ये गेंद लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए आमंत्रित किया था बल्लेबाज को कि आप ड्राइव कीजिए, लेकिन उन्होंने रक्षात्मक तरीके से उसे खेला। सॉलिड डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस, कोई रन नहीं। और ये लगा झटका नंबर 9। बेहतरीन गेंद पिंच होने के बाद हल्की सी बाहर जा रही थी और आखिरी समय पर उस गेंद को गाइड करना चाहते थे, बल्ले का मुख खोलकर उसे स्टेयर करना चाहते थे पॉइंट और थर्ड मैन के क्षेत्र में। बल्ले का बाहरी किनारा, हल्की सी आवाज और उतनी काफी थी अंपायर को उंगलियां उठाने की। हेमंग नाटकर्णी, इन्होंने अपना किया बदला पूरा, भेजा बल्लेबाज प्रशांत को वापस पवेलियन में। आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद डार्क नाइट्स की तरफ से। नंबर 11 के बल्लेबाज करण नायर और उनके साथी गोविंदराज नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर एक अच्छी गेंद की जरूरत है वॉरियर्स को। Sleep in place. Full toss delivery. Driven down the ground, but fielder at mid on cuts it off only for one. Hemang Nadkarni. What a game he's having with the ball into his second over. And he has 3 wickets in his kitty. Oh, quick delivery, run out opportunity, and he has missed it. A bullet throw at the striker's end, and wicket-keeper couldn't gather it at the first attempt, and that allows the batsman to be home safely.
Sanu is the bowler. Strike is with Govind Raj. .97 required of 42 balls. And what a shot! What a pickup shot! Effortless. Brilliant, brilliant use of the bottom hand, and the ball is sailing over the ropes for a maximum. What a way to welcome the new bowler. Govind Raj is not going back without putting on a fight. As long as he is at the crease, he will keep swinging the blade hard. He does it again, but this time no good connection, but enough to clear the fence on the onside. Few bounces over the ropes for a boundary. So this is good hard-hitting batting down the order by the batsman Govind Raj. He will have to keep hitting those deliveries coming his way. And what a pace of a delivery. What a way to come back. Right into the block hole. And somehow batsman digs it out for no run. Length delivery. Once again, quick hand from the batsman. Straight in the hands of the fielder at mid-off. And this time batsman decided to give the strike back to Karan Nair, who has faced only 2 balls. Quicker delivery. Jacks back in once again. Playing from the crease, playing with no footwork at all. Last ball of this over. A full toss delivery. And not a no ball. He was looking to steer it between third man and point once again. Couldn't find the gap. End of over 14. 124 for 9. 36 balls. 86 required. What a brilliant shot once again. Oh, was the ball ahead. Govind Raj. Where was he all this time? Boy, this guy is connecting them so well. Could be the 2 in 2. Could be the 2 in 2. Yes, it is. That's 2 in 2. If the fielder was at the edge of the boundary, would have been a chance to take it. But at the moment, Govind Raj is on song. Make it 3 in a row. That's a hat-trick of success. Unbelievable hitting is making them look so easy. 3 deliveries, 3 slot deliveries, and Govind Raj, ladies and gentlemen, he is putting on a show here at NL Complex, Daisar East. Out of nowhere, the game is on. As long as this guy
is at the crease for Dark Knight. A good delivery. Attacking the stumps this time, shortening a length a bit and playing it straight back to the bowler for no run. In the air, he miscues it this time, falling just short of fielder at long off. He runs back. And the batsmen have taken a single, taken one. Last ball to number 11, Karan Nair. He was looking to join the party. Well, they have taken one. And courtesy a misfield, they have taken a couple of runs. And this will let the batsman Govind Raj retain the strike. And over 15, score is 145 for 9. 30 balls, 65 required. Anything possible. Govind Raj betting on an individual score of 32 of just 12 balls with the help of 4 big maximum and only a boundary. And he continues swinging the bat hard, but this time only to get a single. He's up against a quality bowler, Pratyay, and it's going to be an interesting to see if he takes him on or not. Well, a lot of things to achieve in this match for Dark Knights, whereas Warriors, they need only a wicket, and they have got one. Outside edge, and wicketkeeper does the rest. Pratyay strikes big, strikes for the final time in this inning. With the wicket, it's a curtain for Dark Knights. Saturn Warriors, what a victory this has been for them. A big one. They have they have won this match by 63 runs. They have been exceptional with the bat and exceptional with the ball as well, but not taking anything away from a brilliant fight from Govind Raj. But it was too late for them. So with this, Saturn Warriors have got 2-2. It's
All right then. I have the man of the moment, man of the match, Hemang Nadkarni. Brilliant with the bat, brilliant with the ball. All the three department ticked. Wouldn't have asked for more than this. Yes, to the team owner and Devanshu called him so that I could play more balls. So thanks to him as well. Thanks. Thank you. Hemang Nadkarni had a great all three departments from the presentation.